Hello everybody. This side we are Quantum Quark, and I welcome you to my new video on the topic. Uh, it's all about going to be class ninth NCRT and chapter 1 matter in our surroundings. In this manner, we'll be completing all the chapters of the class ninth. And what would be a differentiating factor in this video? Of course, there are many videos floating around about saying one shot and one shot. It would be a one shot, no doubt, but something which is have an edge on this, in this classes would be the concept clarity. It's really not about getting grades, moreover, but it would be something that would enrich you or give you something uh, that others won't have, because people would tend to learn something and forget it in a while. But if you want to retain and make it a proper knowledge, right, you should really focus. And this is what our differentiating factor is. We will be focusing on the curiosity factor, and secondly, excellence in terms of what, in terms of learning. And when we start learning, it's really not about just in the fast pace, but we'll take our time, we'll understand every bit of this chapter, so that any of your friend or any of your teacher, your siblings would come and ask you, even after 20 years, you're able to understand and recall each and every fact. And something that you'll see in this, in this video as you move along, is the questions I'll, I have brought for you, right? It would something that would enrich you in terms of, and it would be a mind provoking about how to solve that, right? And it would give you an ultra edge in terms of not not in the means. I doesn't mean about acts, right? It's really not about that stuff. But nevertheless, let's move forward and start the chapter. And before starting the chapter, let me introduce myself, who I am, and in which hands you are in. So you can really sit back and you can really believe in me, because I am pursuing BTech CSE, and I know what I'm doing right now. And you'll be thinking about why I'm teaching, right? So it was something like passion in terms of teaching and understanding things and giving some value addition to the people out there. And at least this will be some token of development for the nation from my end, right? Something by giving thought-provoking people out there. Uh, since you had been in class ninth, right? आपको क्या लगता है कि the things are gonna be tough? Absolutely, right? Everything is not easy, but yes, if we do things in a very good manner, in consistency, right? Everything would be easy. Mind this words, because this is what is all about. And okay, so this was something, a short introduction about myself. So let's move forward about the chapter. So when we talk about matter in our surroundings, so what do you understand by matter? Matter is not something that we always have in our schools. कि लड़ाई झगड़ा हो गया and people are meeting each other. Really not like that. We are science student and we will think in a very different way. So, as we look in our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, size, and textures. Everything in the universe is made up of material which scientists have named matter. The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants, and animals, and even a small drop of water. So by these sentences, right, by reading this, you understand that everything around us, like everything, even your father, mother, your pen, pencil, desk, chair, everything is a matter, right? Why? On which criteria we are saying that it's a matter? It's simple. The true criteria that we have is mass and volume. Does it occupy space? Yes, it does. And okay, I'll give you an example of yourself. If you're lying on a bed, you're taking a position, right? Nobody can come up
you and replace it until and unless you are replaceable in terms of, yeah. And secondly, your mass is when you go and measure yourself on your weighing scale, your weight. You're gonna measure your weight. Okay. So you will have around 40 to 50 kgs. So I think this is a good BMI to have, to be very honest. So this is what all about the core matter. Okay. I hope you have understood what matter is. So next time anybody will come to you and ask what matter is, you'll really able to give them a good lecture on that. Like, boys and girls, matter is all about mass and volume. Okay, so let's move forward. Since early times, human beings have been trying to understand their surroundings. Okay, I think it's all about, curiosity, what I said about in the starting of the video. It's the curiosity which interview our mind, and we move forward, we think, we research, we invent, and make our life easier. That's how it works. Not only in science, in every field. Early Indian philosophers classified matter in the form of five basic elements: the panch tattva, air, earth, fire, sky, water. Like everybody said na कि हमारे mythology में भी people used to say about five elements, the five core elements, about air, earth, fire, sky, and water. This is what people at that time, our Indian philosophers, classified matter into, right? Air, earth, fire, sky, and water. According to them, everything living or non-living was made up of five basic elements, right? So this was the some postulates which they, or some, not any basis of any experiment, but they just stated things like our elements is divided into five basic things, that is panch tattva: air, earth, fire, sky, and water. According to them, every living or non-living was made up of these five elements. We'll move forward and we'll see about the same thing was happening with the Greek philosophers too, and arrive at a similar classification of matter. So this was about the Greek guys and our people, the Indian philosophers. And then comes to the modern day scientists have evolved with two types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature. So our guys, again, the modern scientists, the people had classified into two parts, that is physical properties and chemical nature. It's simple, like if you can just recall this up, when you have, I guess, you've studied in the earlier classes about physical change and chemical change, right? कि एक physical change होता है, chemical change होता है. Physical change में we can just reverse the things, and chemical change में you can't. The new product is formed, right? So the scientists have evolved with two types of classification. One, the physical properties and chemical nature. I hope it's very clear about the text that we have studied till here, right? And something, the prerequisite in my classes, to be very honest, you have to bring a highlighter, your NCRT, and your mind. That's it, right? And okay, so in this chapter, we shall learn about matter based on its physical properties. That will come forward. Before that, I'll take you to the activity 1.1 and why it is necessary that you have to study 1.1. It's nothing related to your examination or things like that, but I think it would be something that would really help you to think that why we are studying this, right? Give you the core idea about why we are studying things, right? And it will give you conceptual clarity, to be very honest, and it will set your pace that what the flow of chapter, right? We do a mistake while skipping it, right? But we'll try to cover it up, and so that we can set the tone for the chapter. So in this activity 1.1, what is saying, you can just read it up. It consists of 3, 4, 5, 6, 7 points. So the first point: take 100 ml of beaker, fill half the beaker with water and mark the level of water. Okay, so first we have to take a container in which we have to put 100 ml of water, right? And we can take a scale. Okay, and after that we'll mark the level of water.
Second, they dissolve some salt or sugar in the glass water. It's simple, like you're making a lemonade, but without a lemon. Okay, so you can either add a salt or sugar. Simple. So observe any change in water level. So guys, just I'll give you 5 seconds. Just think what gonna happen, right? Is there any change or in the water level, or it gonna disappear? What gonna happen? What are gonna happen to the salt and to the level of water? So the answer is simple, right? Salt is gonna disappear and the water level is not going to change. Why? Here comes the fact that our matter is made up of particles and they have space in between. So while we just twirl the spoon around and we just mix the salt or sugar, it tend to mix and go and settle in the places in the spaces between the matter, between the particles, not the matter, between the particles, and they go and settle. Right? That's how it works. So this was activity 1.1 and our results. What is our result? No change in no change in water level, no change in water level, and the salt disappear. Yeah. So this was some short rotation. You can write down here in this space. Uh, okay, and this was the result of activity 1.1. So before moving to the next slide, I like to divert your focus to these two questions. You'll be seeing that अरे भैया ये तो CAPF 2010 का है हम क्या करेंगे, we are in class 9th and 10th. So obviously, but as I said, this is an initiative to make you people aware that why you're reading an NCRT. It's important. It's not just a getaway book that you have just once read it and you'll just move out and you're not going to study it again. It's not like that. It's really not like that. Every examination you're going to give after your 12th, you will get these questions again, right? And if you don't mind, this is CAPF 2010. It's conducted by UPSC, right? So try to answer it. Try to challenge yourself and figure it out you can answer. So I'll give you 5 seconds to answer both of this question. 1, 2, 3, 4, 5. And your time is over. So let's read the question first. Which one of the following statement regarding matter is not correct? Okay, so we are talking about not correct. Matter is anything that occupies space. Absolutely correct. At high temperature, matter become plasma. Correct. All matter is composed of large particles. Nah, it's not about large particles. Colloids are made up of larger particles of matter. True. But what about this? And we got the catch. The correct answer would be C. Okay, let's move to the second question. And people understand and take like a joke, like why people are with Panch Tattva, right? Now I understand the importance of this line: air, earth, fire, sky, and water. So, according to earlier Indian philosophers, what are the basic elements described in Panch Tattva? Air, earth, fire, sky, and water. And here we go. Answer is B. Air, earth, fire, sky, and water. Okay. I hope you have understood things till here, and it would have been a crystal clear in your mind. So this is what about the basic thing and basic introduction about this chapter, matter in our surroundings. So now let's talk about the physical nature. As you have studied earlier, that we have divided into two parts, the modern day scientist, and the same manner we're gonna study. Right. So the first was physical property and the guest second was chemical nature. So हमने दो चीजों में divide किया था in physical and chemical. So first, matter is made up of particles. The first point it is stating that matter is made up of particles. True. And इससे पहले हमने जो क्वेश्चन भी किया था उसमें भी लिखा हुआ था. But the catch was not big particles, it is small particles, right? Tiny particles. Like take particle like sand. So how it would be correct?
right? This part. I hope it would have set a tone around, right? So for a long time, two schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed that matter to be continuous like a blockchain, right? Blockchain of wood, whereas other thought that matter was made up of particles like sand. Let us perform an activity and decide the nature of matter. Is it continuous or particulate? Right. So it is nothing but stating two facts that people earlier that how the matter is matter to be continuous or they are in particle like in nature. Like sand is very tiny, right? And blockchain of wood it's bigger. Okay, it's big. So let's move forward. About the activity. How small are these particles of matter? We'll take 2-3 crystal of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water. Okay, let's continue to the next slide. Yes, take out approximately approx 10 ml of this solution and put it into 90 ml of clear water. Take out 10 ml of the solution and keep it into another 90 ml of clear water. Keep diluting the solution like this 5 to 8 times. Is the water still colored? So this experiment is telling about the experiment 1.2, activity 1.2, anything you can say, right? So इसमें कुछ नहीं है. uh, इसमें कह रहा है कि you have to take a potassium permanganate and a water. Okay, so and you have to put it in a beaker and see that is it diluting after 10 ml and taking again 10 ml. So I have to check, right? So what does it states, right? Where keep diluting the solution 5 to 8 times. हम पानी डालते जा रहे हैं, पानी डालते जा रहे हैं, पानी डालते जा रहे हैं. So I'll give you an example. घर पे I've seen Dettol, and if you're putting Dettol in water, and after just putting one cap of Dettol in water, the solution would be quite visible to you, right? वो whitish सी थोड़ी सी color दिखती है, and once you tend to put more water into it, the color slightly disappears or it becomes in a lighter part, lighter shade. So that is what I'm trying to say after this, right? Once you start diluting, the things get because particles slowly, it becomes light, right? So this is say that particles are small in nature. It isn't the nature is particulate. It's not continuous in terms of like it said about here it said about block or wood, right? I hope it's pretty clear around here. So I said it. What I explained about, I gave you the example of Dettol, right? If you put one cap of Dettol to a bucket filled with water, आपने डाल दिया Dettol, अरे ठीक है. अब भाई पानी में थोड़ा थोड़ा व्हाइट दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, और पानी डाल दिया, राइट, और पानी डाल दिया. अब भाई ये व्हाइट कलर ही नहीं दिख रहा है यार. इससे और इसको कंपेयर किया जाए तो द डिफरेंस वुड बी वेरी क्लियर. ठीक है, इसमें concentration of Dettol would be more, whereas concentration of Dettol in this solution would be less. Of course यार, मिलावट है, मिलावट. हाँ हाँ, ठीक है. So what does this experiment shows? This experiment shows that just a few crystal of potassium permanganate can color a large volume of water, about 1000 liter. So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles, right? And that's what I mentioned you about Dettol instead of potassium permanganate, right? So the particles of matter are very small,
They are small beyond our imagination. So the conclusion, the crux about हमने यहाँ क्या पढ़ा, ठीक है? People would ask about कि इस पेज में हमने क्या पढ़ा about you know the 1.1 physical nature of matter. The one point we got is particles of matter is they are very small and beyond our imagination, right? Very small. So I hope you have got the conclusion in this paragraph about the nature, the physical nature of matter. The first point we have got in our arsenal is the particle of matter is very small, right? So let's move forward. Now we'll be seeing the characteristic of particles of matter. Like भाई पार्टिकल तो होता है ये पता चल गया, राइट? अब इसमें कैसा पार्टिकल कैसा रहता है हमें बस ये चुल है कि भाई जानना है कि पार्टिकल्स कैसे रहता है, सो कैरेक्टर क्या है, ढीला तो नहीं है, इट्स गुड और नॉट. सो विल बी सीइंग दैट. सो लेट्स गेट इन. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. हमने पहले ही पढ़ा, राइट? फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट याद करो अबाउट व्हेन वी हैव मिक्स्ड लेमन, वी हैव मेड लेमनेड विदाउट लेमन्स, राइट? हमने सॉल्ट या फिर शुगर मिलाया, भाई वो कहीं चला गया, कहाँ गया? स्पेस, द स्पेस बिटवीन देम, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, राइट? सो let's read it out, right? Once in activities 1.1 and 1.2, we saw that particles of sugar, salt, Dettol, or potassium permanganate got evenly distributed in water. Similarly, when we make tea, coffee, or lemonade, nimbu pani, particles of one type of matter get into the spaces between particles of the other. This shows that there is enough space in particle of matter. So first we understood about that there are tiny particles in matter. Now we figured it out like that there is enough space between particles of matter. I hope it's clear. So we have got some more activities about saying that particles of matter are continuously moving. So you can just not ideally, I think one message to you guys, right? Don't be an idle sitter. Just take a notebook also and write the important points that what you're studying from NCERT, right? And make the few short notes so that once you can just give a rapid revision. Okay, once you'll be revising the chapter so that you'll be able to recall for a long term. So the activity 1.3, what it is saying, put an unlit insect incense stick, agarbatti, okay, in a corner of your class. How close do you have to go to near it so that you can get a smell? Now light the incense stick. What happens? Do you get the smell setting at a distance? Record your observation. क्या कह रहा है? कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ तो कह रहा है. The thing is, we have to take an अगरबत्ती एंड उसको हमको क्लास में रख देना है बिना जलाए. आपको उसकी महक आएगी? रियली नहीं. कहाँ से आएगी यार? हाँ, आएगी बहुत पास आने पे. आपको सूंघना पड़ेगा कि ओह हाँ कुछ तो फ्रेगनेंस है. बट वहीं आपने अगर जला दिया, राइट, लेट इट, एंड फिर देखो पूरी क्लास में वो महक दौड़ती है, राइट? सो हाउ, कभी सोचा है क्यों? क्यों भाई वो उतनी दूर रखा हुआ हमें यहाँ कैसे कैसे आ रही है स्मेल? अरे गरम समोसों की. जब आप जाते हो कहीं से वहां पे दुकान पे, वहां पे हलवाई समोसे बना रहा है, यू गेट द स्मेल, राइट? समोसे बन रहे हैं वहां पे, कैसे पता चलता है? पूरियां तल रहे हैं, पता चल जाता है, राइट? इट्स इट्स साइंस, राइट? इसका रीजन है. द रीजन इज डिफ्यूजन. सो पीपल से भैया डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन कुछ नहीं, एक प्रॉपर्टी है जिसमें पार्टिकल मूव करता है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन,
ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखो, आगे हम पढ़ेंगे हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। ठीक है, दिस इज व्हाट डिफ्यूजन इज, सिंपल। तो इसका आंसर आपको मिल गया। लाइक व्हाट आर ऑब्जर्वेशन, सिंपल। वन, आपने अगरबत्ती जलाई तो महक पूरी रूम में आएगी, वरना अगर वो बिना जले है तो इट वुड बी इन अ रूम एंड will not be able to smell, right? It would restrict to very limited area. So I hope activity 1.3 is pretty clear. अब चलते हैं activity 1.4. Take two glasses beaker filled with water, put a drop of blue or red ink slowly or carefully along the sides of first beaker and honey in the same way in the second beaker. Leave them undisturbed in your house or in a corner of the glasses. Record your observation. What do you observe immediately after adding an ink drop? What do you observe immediately after adding a drop of honey? How many hours or days does it take to spread evenly? It's really not about here, it is talking about how we mix, है ना? Mix, how the particle get mixed in the other particle. It's simple. Honey की density ज़्यादा है, it will take time, right, to mix with the water. Again, and whereas we talk about ink, it gonna mix it rapidly. अगर आपने zinc डाली, it would ton से, it would just spread over all over the water. Whereas honey, it would take time. We need to twirl it up with a spoon, and then we get a clear solution. So let's move to activity 1.5. So activity 1.5, drop of crystal of copper sulfate, that is CuSO4 dot 5H2O. So 5H2O is the water of crystallization. You'll get to know just as we move forward in this series. We'll complete this class 9th and then we'll move to class 10th. You'll understand all of this, right? All of this. So here it's speaking about drop of crystal of copper sulfate or potassium magnet into a glass of hot water, another containing cold water. Do not stir the solution. Allow the crystal to settle in the bottom. What do you observe just above the solid crystal in the glass? What happens when the time passes? What does this suggest about the particles of solid and liquid? Does the rate of mixing change in temperature? Yes, it does. So taking about nothing about is giving you a principle and a clarity that अगर आपने गर्म पानी लिया है and ठंडा पानी लिया है, in which beaker it's gonna dissolve earlier. या तो वो क्या बोलते हैं, गर्म पानी में जल्दी से डिसॉल्व हो जाएगा या तो ठंडे पानी में, राइट? सो आपने सुना होगा, राइट, कि गर्म पानी में कपड़े धोते हैं तो थिंग्स रियली गेट फास्टर, faster in terms of the absorption of detergent into the clothes. It's much faster. Why? Because the rate of mixing the change with temperature. There is a change and it is directly proportional. More the temperature, more the rate of mixing, right? So I hope it's very clear. And you can just do this experiment with on at your end too. You can take a warm warm water and a cold water and you can see anything, you can dissolve anything. You can see that अरे गर्म पानी में जल्दी से उगल जा रहा है यार, ठंडे पानी में हो नहीं रहा. Because yes, temperature play a role in intermixing, right? Intermixing, and it's directly proportional, because as you increase the temperature, the rate of mixing would increase. I hope you got a crux about what we have learned. So let me quickly sum up this page. हमने यहाँ क्या पढ़ा? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर. हमें हमने पहले पढ़ा कि पार्टिकल्स होते हैं मैटर में और वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. देन हमने पढ़ा कि भाई पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर में उनके बीच में स्पेस भी होता है. फिर हमने पढ़ा पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली. बाय हाउ? लाइक 1.3, 1.4 और 1.5 से हमने क्या समझा कि भाई मूवमेंट तो हो रही है, पार्टिकल्स मिलके से रहे यार एक दूसरे से, पार्टिकल में मूवमेंट हो रही है. या तो
कुछ कुछ इसमें प्रॉपर्टीज आ रही हैं जैसे डिफ्यूजन की, आपने इंसेंस स्टिक जला दिया एंड फिर महक हो रही है, कैसे हो रही है? राइट, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं ना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट, तभी तो कुछ हो रहा है, देयर इज चेंज, राइट? This is what this was all the stuff that we have studied in this slide. Let's move to the next slide. Okay, so here we are about, let's read it first. Particles of matter are continuously moving. Okay, ये तो मैं पहले से बताता, कुछ नया बताओ. That possesses what we call kinetic energy. Oh हाँ, kinetic energy. तो kinetic energy बहुत सुना होगा. What is kinetic energy? What is kinetic energy? सो एक होती है पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी में कुछ नहीं है, वो भाई साहब शांत में ही पावर है, शांति में ही पावर, और ये भाई बहुत उथल पुथल करते हैं. दीज गाइज मूव एंड क्रिएट ट्रकस, यही तो है. ठीक है, सिंपल सी बात है. दिस एनर्जी फॉर्म्स व्हेन इट मूव्स, व्हेन पार्टिकल मूव्स, व्हेन देयर इज अ चेंज, व्हेन देयर इज अ चेंज. ठीक है भाई, चेंज हो रहा है ना. वाई, अब तुम्हें लग रहा होगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात ही क्यों की है? क्यों बात की? बिकॉज वी हैव सीन द मूवमेंट. मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट? अगर हमने 1 पॉइंट एक्टिविटी 1.3 देखा, 1.4 देखा, 1.5 देखा, उसमें क्या हो रहा है? 1.3 में हमने इंसिस्टिक जलाई, अगरबत्ती जलाई, उसमें पार्टिकल मूव हो रहा है, महक कैसे आ रही है, राइट? सेकेंड 1.4 में we have seen the intermixing part, right? Again with glasses and beakers, we are putting ink and then honey. We are seeing that कौन जल्दी मिल रहा है, मूवमेंट किसमें जल्दी हो रही है. 1.5 में क्या देखा हमने? We have seen that we are taking a crystal of copper sulfate or potassium permanganate and we are putting, we are seeing भाई जल्दी किसमें दौड़ रहा है, हॉट वाटर में या फिर कोल्ड वाटर में. ठीक है, वी फाउंड दैट हॉट वाटर में भाई वो बहुत तेज दौड़ता है. ठीक है, तो jokes apart, let's move to the next part. As the temperature rises, particles move forward. As I explained you earlier, that temperature and the movement of particles are directly proportional. जितना गर्म उतना तेज भागेगा पार्टिकल. समझ गए आप? ठीक है, ऐसा नहीं होता कि भाई गर्मी हो रही है यार, गुस्सा आ गया, फिर आप देखो कितनी तेज भागते हो, वो आपको मार दे एक बार और फिर आपका तापमान बढ़े अंदर से, अरे भाई आज नहीं छोड़ूंगा. ठीक है, इन दिस मैनर. So we can say that with increase of temperature, the kinetic energy of particle is also increases. So this is point to be noted. So what we can understand here is, okay, okay, huh. So we can say that increase in temperature, kinetic energy of particle also increases. You can highlight it up, right? This is important. This part is important. Okay. Kinetic energy increases as the temperature increases. आप कहीं लिख लें. So in the above three activities किसकी बात करें जो हमने पढ़ी है अभी, 1.3, 1.4 and 1.5. ठीक है, we observe that uh, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. हाँ भाई, कोई मिलाने तो जा नहीं रहा है, खुद ऑटोमेटिक है भाई. कौन जाके बोल रहा है कि भाई जाओ मिलो एक साथ, हमने डाल दिया, खुद जाके मिल रहे हैं एक दूसरे से. तो this is what it's saying, that a particle of matter intermix on their own with each other, that do so by getting into the spaces between the particles. हमने याद करो एक्टिविटी 1.1, भाई इसलिए एक्टिविटीज होती हैं एनसीईआरटी में. पीपल डोंट अंडरस्टैंड एंड दे स्किप, एंड दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक एंड दैट्स द लूप होल. पढ़ो, it's not about somebody is forcing you to study. The study should come within, and like should really get an approach कि भाई नहीं आज थोड़ा पढ़ना है, पढ़ना इन द सेंस जानना है चीजें, the curiosity. It's not that कि यार कोई force कर रहा है मैं पढ़ने के लिए. It's really not gonna work in that manner for the long term. ठीक है, so that's how, right? So you can really connect by activities. There is a connect, it's a chain.
ठीक है भाई कि आई सेड इट, वो एक टोन सेट करता है आपका पूरा चैप्टर का। लाइक एवरी एग्जांपल दे विल जस्ट से कि एक्टिविटी 1.1 में किया है, 1.2 में किया है। ठीक है। So till now you have understood some concept of particles, that particles होते क्या हैं, right? Starting से हमने पढ़ा कि भाई पांच तत्व होते हैं। Then we studied about the activity 1.1, we understood that there is space between particles. ठीक है, when we made lemonade without lemons, and then we understood about how small the particles are by the Dettol experiment. ठीक है, कि भाई इतना डाइल्यूशन के बाद भी there is something left around. Then we understood about again we studied further about the space. ठीक है, again by just comprising it up and giving it a crux, and then we understood that it is continuously moving. Why? Because हमने 1.3 1.4 और 1.5 में वही तीनों चीज पढ़ी कि पार्टिकल मूव। ठीक है, इट्स रियली नॉट कांस्टेंट, इट डज मूव। ठीक है, नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट that you should really think upon is the intermixing of particle of two different types of matter on their own is called diffusion. आप बोलोगे कि भैया ने अभी कुछ और डेफिनेशन बताई थी, इधर कुछ और डेफिनेशन। एब्सोल्युटली राइट, बट सोचने वाली बात ये है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स इन of two different types of matter on their own is called diffusion, right? You also observe that on heating diffusion becomes faster. अब हम इन दोनों पार्ट को डाइसेक्ट करते हैं। पहले तो अबाउट द डिफ्यूजन का, पहले तो डिफ्यूजन के बारे में देखते हैं, डिफ्यूजन क्या कह रहा है। पहले ही मैंने बताया था डिफ्यूजन इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। ठीक है, अब ये बस हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन जाने का ऐसा मतलब नहीं है यार। you'll see this and the for the coming chapters कि क्या होता है। इट्स सिंपल, लाइक अगरबत्ती से एग्जांपल देते हैं। अगरबत्ती वाले में ना ये डिफ्यूजन की बात आई थी। अरे हमने यहाँ अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती नहीं जलाई तो बस यहाँ जो बंदा खड़ा है सिर्फ उसी को समझ में आएगा भाई क्या खुशबू है। अब ये पूरी क्लास है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बंदे बोलते हैं यार ये राजू भाई क्या क्या सूंघ रहे हैं भाई, समझ में ही नहीं आ रहा, हमें तो कुछ आ ही नहीं दी महक वहक, क्या कर सकते हैं अभी। तो भाई ने बोला नहीं, सबके लिए होना चाहिए, ये सिर्फ मैं नहीं करूँ। तो भाई ने आग लगा दी, अब ये जलने लगी, अब ये पूरी महक इसमें फैल गई क्लास में। ओ, यही तो है डिफ्यूजन, मूविंग फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। पहले इसी को आ रही थी ना वो खुशबू, एंड देन अब पूरी क्लास को आ रही है। सो द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन इज व्हाट डिफ्यूजन इज, एंड दिस इज डेफिनेशन नंबर 1। एंड दूसरा डेफिनेशन आप ये भी कह सकते हैं, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये याद से दिमाग में रखिएगा, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब दूसरे स्टेटमेंट पे आ भाई क्या कह रहा है, वी हैव आल्सो ऑब्जर्व्ड दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। यस इट डज, यस इट डज। अभी हमने देखा कि एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर पार्टिकल की मूवमेंट ही बढ़ जा रही है भयंकर। अभी मैंने बताया आपको कोई थप्पड़ मारे, आप देखो कितनी जल्दी भागते हो। ठीक है, आपका बॉडी का तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, द सेम मैनर विद द पार्टिकल्स आल्सो। भाई हम भी तो पार्टिकल से बने हैं, तो द नेचर वुड बी सिमिलर, सिंपल। ठीक है, तो दो चीज आपको बहुत क्लियर है, एक तो टेम्परेचर और डिफ्यूजन का रेट भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ेगा, डिफ्यूजन का रेट भी बढ़ेगा, सिंपल, इट वुड बिकम फास्ट। तो अभी हमने पढ़ा कि पार्टिकल पार्टिकल में अबाउट द काइनेटिक एनर्जी, राइट? द पार्टिकल ऑफ मैटर इज continuously मूविंग एंड दैट व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एंड देन वी अंडरस्टूड अबाउट द डिफ्यूजन पार्ट। अबाउट डिफ्यूजन होता क्या है, तो वी हैव स्टडीड अ स्टेटमेंट अबाउट द intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. So this was something that what we looked forward to,
Now let's study the next topic about particles of matter. Particle of matter attract each other. ठीक है. अब भाई पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं. ओके. पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. सो अब एक एक्टिविटी समझते हैं. एक्टिविटी 1.6. Play this game in the field. Make four groups of four human chains. The first group should hold each other from back and lock them like Edu Meet Me Dancer. The second group should hold hands to form human chain. देख रहे हो, पहला चेन होना चाहिए वो पीछे से पकड़े एक दूसरे को साथ में ऐसे, जस्ट लाइक दिस पीपल, दिस काइंड ऑफ अ चेन. एंड सेकंड हाथ पकड़ के. The third group should form a chain by touching each other with their only fingertip. By fingertips सब chain बनाने के लिए बहुत tough, but we can do it, right? Now the fourth group of student should run around. अब भाई चौथे ग्रुप होनी चाहिए इसको तोड़े जाके. भाई यार बहुत मेहनत कराते. ठीक है भाई कर लेंगे. हमें क्या समझना है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. अब समझ लो अपने दोस्तों को पार्टिकल्स. एक साथ तुम लोगों ने कमर हाथ में लगाया है एंड यू आर टुगेदर. आए बंदा तोड़ने, नहीं तोड़ पाएगा जल्दी से. दूसरी ग्रुप को तोड़ने गया बंदा, वो चौथी ग्रुप वाला बंदा दूसरी ग्रुप को तोड़ने गया, तो भाई उसने थोड़ा दम लगाया, टूट गया चेन. जो हाथ से पकड़े थे भाई थोड़ा सा डिफरेंस था. द बाइंडिंग, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाज लेस एज कंपेयर टू द फर्स्ट ग्रुप. वेयर एज द थर्ड ग्रुप जिसमें भाई फिंगर से ग्रुप बना रहे, what with the force of an attraction or something, the force would be very less. They'll not be easily binded together, right? So this was the experiment. This was the activity 1.6, stating that the force of attraction between each particle. That is what. If we consider each student as a particle of matter, then which group of this particle held each other with the maximum force? Of course, the first group. GP1, group 1. Simple, no doubt. Take an iron nail, a piece of chalk. Now let's move to the activity 1.7. क्या कह रहा है? Take an iron nail, a piece of chalk and a rubber band. Try to break them, hammering, cutting and stretching. In which of these three substances do you think the particles held together with a greater force? Simple. आपको एक आयरन नील लेनी है, पीस ऑफ चॉक लेना है, रबर बैंड लेना है, आपको खींचना है, तोड़ना है कि भाई देखते हैं तोड़ के किसमें ज्यादा दम है. ये नहीं होता, आओ देखते हैं कितना दम है तुम्हारे अंदर. इट्स सेम इन सेम मैनर, हम इनके दम देख रहे हैं. आयरन नेल, पीस ऑफ चॉक, रबर बैंड. सिंपल है भाई. आयरन नेल को कैसे तोड़ोगे, वो तुम्हें तोड़ देगा यार. पीस ऑफ चॉक इजीली टूट जाएगा. रबर बैंड अगेन आप स्ट्रेच करोगे तो टूट जाएगा. सिंपल. आयरन नेल तो अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताऊं तो फर्स्ट चचा इनमें बहुत पावर है, फिर रबर बैंड में थोड़ा पावर है, और चौक में बहुत, सॉरी 3 लिख दो ना, और फिर क्या बोलते हैं रबर बैंड, सॉरी पीस ऑफ चॉक में इट्स गॉट द लीस्ट पावर. ठीक है. आई होप इट्स वेरी क्लियर. तो इसका आंसर क्या हुआ? इन विच ऑफ द अबव थ्री सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स? ऑफ कोर्स आयरन नील. Next, activity 1.8. Take some water in a container. Try cutting the surface of water with your fingers. Were you able to cut the surface of water? What should be the reason behind the surface of water remaining together? इट्स सिंपल यार. बचपन में हमने खेलते नहीं थे, अगर आपने बाल्टी में पानी भरा फिर हाथ मार रहे हो उसको निकालने का, एंड यू ट्राइंग टू कटिंग द सरफेस. रियली नॉट, ऐसा होता ही नहीं है यार. थोड़ी देर करोगे फिर अगेन इट वुड गोना मिक्स इट टुगेदर. ऐसा नहीं होता. ठीक है. नेक्स्ट मूव विल मूव टू द स्टेटमेंट. क्या कह रहा है? द अबव थ्री एक्टिविटीज 1.6, 1.7, 1.8 suggest that particles of matter have force acting between them. समझ रहे हो अबाउट क्या सजेस्ट कर रहा है हमें? That particles of matter have force acting between them. इनमें है force of attraction. ठीक है, between them. So again this point is very clear that particle के अंदर होता है, they attract each other, they have the force of attraction. I hope activities are getting very clear, and if you want to give any suggestion that how we can take on the classes again with some improvement, like, and your suggestions would really be considered about once I'll make the second slide or the second topic. I really consider your thoughts
and how we can make the videos better. And by commenting down, you can just end up giving me ideas about how we can take this up and we can benefit you as much as we can, right? The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. Of course, यार हर एक बंदे के अंदर सेम टाइप का दम नहीं होता. It's simple. Every person, अगर ये मोटा बंदा है, मोटा in terms of I'm not doing any body shaming, but ये बंदा है और ये बंदा है, दोनों की फाइट हुई, कौन जीतेगा? एविडेंट है कि ये बंदा जीते, ज्यादा फोर्स अप्लाई कर पाएगा, ऑफ कोर्स. बट हाँ, कुछ लोग कहेंगे यार ही इज क्वाइट स्विफ्ट एंड ही कैन मेक थिंग्स एंड जल्दी जल्दी इधर उधर हो जाएगा एंड he'll deceive him. नहीं, ठीक है, आई नो दिस इज दिस गाय गॉन ऑफ, ठीक है, दिस वन, ठीक है. सो इट्स सिंपल. इस एग्जाम्पल से मेरे कहने का मतलब ये है कि द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन वुड नॉट बी सेम फॉर एवरी मैटर. इट वुड वेरी फ्रॉम वन मैटर टू अनदर. आई होप it is very clear. You can take a deep breath and then you can just revise once. क्या है? You can pause the video and then you can revise it up. Now we'll move on to some questions. इतना पढ़ा है, let's answer this question. क्या कह रहा है? मैं भी अभी आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है? Which of the following are matter? Chair, air. Okay, we have to classify a matter. Okay, chair matter है, air matter है, love matter नहीं है, it's an emotion. स्मेल मैटर नहीं है, हेट मैटर नहीं है, आमंड्स मैटर है, थॉट मैटर नहीं है, कोल्ड मैटर नहीं है, लेमन मैटर है, वाटर मैटर है, स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर नहीं. ठीक है. नेक्स्ट, give reasons for the following observation. The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go too close. ठीक है. तो अभी हमने अगरबत्ती वाला एग्जांपल दिया था, राइट? द डिफ्यूजन, आंसर वुड बी डिफ्यूजन. भैया क्या बोला था मैंने डिफ्यूजन का? डिफ्यूजन इज डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. ठीक है, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. वो हॉट सिजलिंग फूड है, उसकी महक दूर तक जाएगी. वेयर एज अगर वो ठंडा फूड है, इट वुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू अ सर्टेन एरिया. सिंपल, वो क्लास वाला एग्जाम्पल. ठीक है. Next, the third part. A diver is able to cut through water in swimming pool. Which property of matter does it show? Nothing. That particles have space between them. It's simple and it can cut through. ठीक है, cut through से मतलब है deep dive into it. ठीक है. The simple answer to it is that particles in matter have space between them. Simple. Next, what are the characteristics of the particles of matter? हमने क्या पढ़ा about the characteristic of particle? First, particles have space. P से आप particle समझ गए, have space. ठीक है. Second, particles attract each other. इससे पहले भी the point zero that particles are very tiny, very small. ठीक है. Till now we have studied about this 3 points about the characteristics of particle. Particles are very tiny. Again, second, particles have space between them. Third, particles attract each other. हमने वो चेन वाला एग्जांपल किया था, राइट? साथ में. So this was all about the characteristic of particles. We studied till now. We have studied what is matter, then what is matter made up of, particles, how particles are, they're tiny, they're big, in what nature. Then we understood
the characteristic of particles of matter. Just 3 point, the particles are very tiny. Second, they have particles have space between them, like कैसे mix हो जा रहा है and where it is moving, वो disappear कहाँ disappear क्यों हो जा रहा है. Then the attraction, the particles attract each other, the binding particles. ठीक है, the chain वाला example. Till now we have studied this much. Let's move forward. So now we'll study about states of matter. ठीक है, till now we have studied about what is matter, the particles of matter, about the particles of matter. Now we'll study about the states of matter. It's not about the states that the states that exist in our country. Okay? It's something different. Observe different types of matter around you. It would be found what are its different states. We can see that the matter around us exists in three different states. That is solid, liquid, gas. We'll take example of water. Water, it would be very familiar to you. When I talk about water, वाटर पहले अपने स्टेट में है लिक्विड, गीला गीला सा. फिर हमने इसको रेफ्रिजरेटर में डाल दिया, आइस बन गया. ठीक है, फिर आइस को बाहर लाया, फिर वाटर बन गया. वाटर को फिर हमने गर्म कर दिया, वेपर बन गया. ठीक है भाई, वाटर में ही तीनों स्टेट समझा दिए. दैट व्हेन इट इज आइस इट इज सॉलिड, व्हेन इट इज लिक्विड, व्हेन इट्स इन इट्स नेचुरल फॉर्म इट्स लिक्विड. when natural form in ये तीनों टाइप्स में नेचुरल फॉर्म में रहता है, बट द नेचुरल स्टेट आई वुड लाइक टू से that water is liquid. Then third, gas बन जाता है once we heat it. I hope this by this example it आपको बहुत clear हो गया the three states of matter: solid, liquid and gas. These states of matter arise due to the variation in the characteristics of particles of matter. ठीक है, अब ये स्टेट्स आए कहाँ, स्टेट ऑफ मैटर आए क्यों? बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर. अब पार्टिकल्स में देख रहे हो, पार्टिकल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक. पार्टिकल से ही बना है मैटर, छोटे छोटे पार्टिकल से. ठीक है, और पार्टिकल कैसे बना है? एटम से. हम आगे पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट वी हैव टू स्टडी दैट उसके वेरिएशन में जो पार्टिकल्स में वेरिएशन आ रहे हैं, इस वजह से भाई इट्स चेंजिंग इट्स स्टेट. वो सॉलिड सॉलिड नहीं रहा, वो लिक्विड हो गया. वो लिक्विड लिक्विड नहीं रहा, गैस हो गया. ठीक है. So now let us study about the properties of these three states of matter in detail. So by this, first we'll study about the solid state. Solid. ठीक है, solid क्या? Table, your chair, your pencil, your pen. ठीक है. अब activity 1.9 क्या कह रहा है? Collect the following articles: a pen, a book, a needle, a piece of wooden stick. Sketch the shape of above particles in a notebook by moving a pencil around them. Do all this have a definite shape, distinct boundaries and a fixed volume? Yes, it does have. I hope it's clear. इसका आंसर दे देते हैं कि yes it does have. बच्चों वाली बातें करते हैं. What happens if they are hammered, pulled or dropped? It will change its shape. डिसफिगर हो जाएगा ना ब्रो, आपको मारोगे आपका शक्ल थोड़ा बिगड़ जाएगा. Are this capable of diffusing into each other? No. एक दूसरे में नहीं मिल सकते. ठीक है, they have got their own fixed boundaries, fixed shape. Try compressing them, applying force. Are able to compress them? No. ठीक है, compressibility is very less. अब इन चारों पॉइंट से आपको सॉलिड स्टेट के चार प्रॉपर्टीज पता चल जाएंगे. पहला, it have definite shape, a fixed volume, a fixed boundary. वह उससे ज्यादा वो एक्सपैंड नहीं कर सकता, उतना ही है उतना ही रहेगा. ठीक है, लाइक ह्यूमन बींग्स, हमारी हाइट एक फिक्स हाइट है कुछ सालों के लिए. ऑफकोर्स एज वी इंक्रीज इन एज आवर हाइट इंक्रीजेस टिल अ सर्टेन लेवल. ठीक है, बट मैं बता रहा हूँ एक अडल्ट के बारे में, उसकी हाइट और उसका शेप, उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है until unless वो ज्यादा खा नहीं लेता, मोटा नहीं हो जाता. वो दैट इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन. ठीक है, वी आर स्टार्टिंग विद द आइडियल कंडीशंस एंड आइडियल एग्जांपल्स. ठीक है, तो फर्स्ट by this first point you also get to understand about the solid that it is fixed. ठीक है,
And the second point, if you see about hammered, pulled, or dropped, if you're trying to disfigure it, it is getting disfigured. Okay. Second, are they capable of diffusing into each other? No, they just can't be diffused in each other. Fourth point, try compressing them by applying force. Are you able to compress them? No, if we're able to compress it also, na, so it will take time. It will take a huge amount of force. ऐसा नहीं है कि they are not compressible, but the amount of force as compared will apply to this liquid and gas part, it is quite tough. ठीक है, it's the compressibility is negligible. ठीक है, so let's move with the text. All the above are examples of solids. We can observe that all this have a definite shape, distinct boundaries, and fixed volume that have negligible compressibility. Solid have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force. ठीक है? Solids may break under the force, but it is difficult to change their shape, so they are rigid. तो भाई इससे हमें क्या पता चलता है सॉलिड्स के बारे में? पॉइंट नंबर वन, फिक्स्ड वॉल्यूम. ठीक है. Second, they have negligible compressibility. Point number two, solids have tendency to maintain their shape. It would break, but ठीक है, it would break, but it is difficult to change their shape. ठीक है, they are rigid, they're not flexible. Simple. ठीक है. अब कुछ एग्जाम्पल और कुछ कंसिडरेशंस करते हैं. Consider the following. What about a rubber band? Can it change its shape on stretching? It is a solid. Yes, it changed, but it would reverse back. Again, it would reverse back to its natural shape. ठीक है? तो does it change its shape? Yes, it does, for but a short interval of time. But again, it comes in very own shape. ठीक है? What about sugar and salt? When kept in jars, these take the shape of jar? No, absolutely not. पानी थोड़ी ना है. ठीक है? It's solid. What about sponge? It is a solid, yet we're able to compress it. Why we are able to compress it? Because it have holes in it. ठीक है? That's the reason we are able to compress it. Again, I have said it. It is a dynamic. It is all depend upon the particle, the nature of the particle. उसका particle कैसा है? उसके basis पे उस matter की state depend करती है. उसकी characteristic depend करते हैं. ठीक है? Next, all the above solids as. First, हम rubber band की बात कर रहे थे. A rubber band changes shape under the force and regains the same shape when the force is removed. If excessive force is applied, it breaks. True. ठीक है? The shape of each individual sugar, salt, crystal remain fixed, whether we take it in our hand, put it in a plate or in a jar. ठीक है? Again, it's not water, right? आप खुद देखो घर पे चीनी रखते हो, it doesn't take the shape of jar. ठीक है? ठीक है, it's again a solid. अगर आप उसको निकालोगे तो it would be solid. ठीक है, it would not take the shape of jar. A sponge has a minute hole in which air is trapped. When we press it, the air is expelled out as we able to compress it. ठीक है, and I said it, a sponge उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि उसमें माइन्यूट होल्स होते हैं. So air is trapped and when we press it, we expel out the air and we are able to compress it. That's it. That's all about the state of matter. State, not state of matter, but the state of matter. My first topic, the solid state. I hope it's very clear. Now we'll figure out the liquid state. इससे पहले हमने पढ़ा about the solid state. Now we'll figure out with the liquid state. कि liquid state है क्या भाई? पानी, cold drink, juice, ये सब liquid है. ठीक है. We have seen now we'll understand by activity 1.10 about the 10 activity we have studied. मजा आ रहा हो activity पढ़ के भी. ठीक है. And I hope again with this from now onwards you'll really give some amount of time in reading this. ठीक है, and understanding a bit. Collect the following: water, cooking oil, milk, juice, a cold drink. ठीक है. Containers of different shapes. Put a 50 ml mark on this containers using a measuring cylinder from the laboratory. What will happen if these liquids are split
spilt on the floor. Measure 50 ml of any one liquid and transfer it into different containers one by one. ठीक है? Does the volume remain the same? Of course the volume will remain the same. 50 ml है तो है. ठीक है? Does the shape of the liquid remain the same? Shape of the liquid? No. If you're passing from one container to different containers, it would change, right? ठीक है? It will take the shape of the container. When you pour the liquid from one container to another, does it flow easily? Yes, it does flow. ठीक है? Fluidity है. That's why it's called fluid. ठीक है? By this, you have understood that, got the basic temperament about the liquid state. ठीक है? We observe that liquid have no fixed shape but have a fixed volume, right? Understand this. छोटी सी line है, but it's very crucial to understand. We observe that liquid have no fixed shape but have a fixed volume. इस एक्टिविटी से ये पता चलता है. This is our conclusion. This is our conclusion, that the liquid have no fixed shape but have a fixed volume. Right? 50 ml लिया, the volume is fixed, but the shape इस कंटेनर में डाल दिया, इस कंटेनर में डाल दिया, इस कंटेनर में डाल दिया, तो इट इज, मान लो ये भी कंटेनर है, इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया, so the shape is changing, but 50 ml ही है ना, the volume is constant all the times, but what is changed? The shape. ठीक है? So simple. So they take up the shape of the container in which they are kept. Liquids flow and change shape, so they are not rigid but can be called fluid. इसी वजह से इसको fluid कहते हैं. The nature of changing the shape and the flow. ठीक है? That's why it's not rigid but it can fluid. It is called fluid. This is the reason. वरना solid को भी fluid बोल देते हैं यार. But भाई वो तो rigid है, वो एक जगह ही रहते हैं. Simple. But whereas liquid, it changes its shape and it flows. That's why it's called fluid. I hope you understood why liquid is known as fluid. Then, so it's referring to activity 1.4 and 1.5, where we saw the solids and liquid can diffuse into liquids. What? Solid and liquid can diffuse into liquids. Okay, so first we'll refer to 1.4 and 1.5. We have taken red ink in 1.4 and 1.5 में copper sulfate. राइट. सो 1.4 में इंक विंक लिया था हमने, एंड 1.5 में हमने वो ले लिया था, क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट, अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, एंड फिर हमने उसको हॉट वाटर और कोल्ड वाटर में डाल किया था. तो उसमें वो बता रहा है, इट इज रेफरिंग टू दैट एक्टिविटी दैट in 1.4 and 1.5 में we saw that solid and liquid can diffuse into solid and liquids can diffuse in liquids. ठीक है? 1.4 में liquid था about the ink and honey, and whereas 1.5 में solid था, the crystal of copper sulfate or potassium permanganate. ठीक है? The gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water. These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for survival of aquatic animals and plants. तो ये क्या कह रहा है? आपको कभी लगता होगा ना पानी में यार मछलियां जी कैसे लेती? ठीक है? सिंपल. अब वाटर में अगेन इट हैज डज हैव स्पेस, उसके अंदर ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड. अब आप पूछोगे गैस, गैस भी डिसॉल्व होता है? यस, इट डज डिसॉल्व इन लिक्विड. ठीक है? सो gases, solid, it all can, you know, diffuse and mix and be dissolved in the liquid. I hope it's very, you have understood the part. So these gases, especially oxygen, carbon dioxide, are essential for survival of aquatic animals and plants. So all living creatures need to breathe for survival. The aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. Thus we may conclude that, what we conclude, that solid, liquid and gases can diffuse in liquids. This is important. This is important. Okay. That solid, liquid and gases can diffuse into liquids. The rate of diffusion of liquid is higher than the solids. Of course, liquid में higher होगा because the
what we say, the binding, it's more not over, liquids are not rigid, the उनका composition ऐसा होता है कि they have more space as compared to solid. This is due to the fact that in the liquid state particles move freely and have greater space between each other as compared to particles in the solid. This is what I said, space liquid में ज्यादा होता है as compared to the solid. ठीक है, this is the reason. Try to reason things, वरना it would just not be about uh, just taking in what we are being said. Just question a back, that's how you learn. ठीक है, that's how you learn. ठीक है, just try to question things about, ठीक है ये बोला है तो ऐसा क्यों होता है. ठीक है, that's the part and parcel of learning. ठीक है. Third, we have studied about the solid state, we have studied about the liquid state. Now I'll be moving on to the gaseous state. So have you ever observed a balloon seller filling a large cylinder of balloons from a single cylinder of gas? Inquire him and how many balloons is he able to fill of one cylinder. Ask him which gas does he have in cylinder. So mostly the people around there वो एक helium gas cylinder रखते हैं, helium gas cylinder, and उसमें से फिर वो balloons फैलाते हैं. Why helium? Because it's compressible. It's compressible. Large amount of helium gas would come easily into that cylinder. अब हम एक एक्टिविटी द्वारा समझते हैं कि क्या है भाई. So let's move to activity 1.11. So what is saying? It is stating that take 300 ml syringes and close their nozzles by rubber corks as shown in figure. इसको हमने बंद कर दिया रबर कॉक लगा के. ठीक है. Remove the pistons from all the syringes. Okay. Leaving one syringe untouched. एक syringe को ऐसे ही रखा, बाकी में से निकाल दिया. ठीक है. Fill the water in the second and piece of chalk in the third. ठीक है. एक में piece of chalk डाल दिया, एक में water डाल दिया. Insert the piston back into the syringes. You may apply some Vaseline on the pistons before inserting into the syringes for the smooth movement. Now try to compress the content by pushing the piston in each syringe. ठीक है. So let's see क्या होता क्या है. So what we observe? We observe that gases are highly compressible. ठीक है, as compared to the solids and liquid. ठीक है. So when we talked about the syringe वाला part, तो उसमें क्या होगा? ठीक है, इसमें ये होगा कि जो liquid होगा, liquid would be more compressible as compared to the piece of chalk. ठीक है, because the thing is liquid have got high compressibility as compared to the chalk. ठीक है, I hope it's very clear. So we have seen that gases are highly compressible as compared to solids and liquids. The liquefied petroleum gas LPG cylinder that we get into our home for cooking or oxygen supplied to hospitals in cylinders is compressed gas. ठीक है, जो भी एलपीजी में आता है, हमारे घर पे सिलेंडर्स आते हैं, इट्स ऑल कॉम्प्रेस्ड. ठीक है, बिकॉज दे आर पुटिंग इनटू, व्हाई इट हैव सेड दैट it is liquefied petroleum gas. Why it is liquefied? Because once we see in the containers वो liquid में होता है, to be very honest. ठीक है, वो ऐसे compress किया जाता है कि once it is in the cylinders it is in form of liquid, and once we put the nozzle up, एक बार हमने nozzle on किया तो it just changes its form from liquid to gas. ठीक है, because as we come out the temperature changes. ठीक है, so the compressed natural gas is used as fuel these days in vehicles. ठीक है, due to its high compressibility large volumes of gas can be compressed into small cylinder and transported easily. इसमें फिजिबिलिटी भी दिखती है, बिकॉज अगर हमें इतने इस गैस को एज अ फ्यूल यूज करना है तो रीजनेबल भी होना चाहिए, देन ट्रांसपोर्टेशन में इजी होना चाहिए. तो इट इज जस्ट टिकिंग ऑल द बॉक्सेस. ठीक है, वॉट एवर वी नीड इन अ गुड फ्यूल. दैट्स वाई CNG इज नाउ डेज बीइंग मोर कॉमन एज अ फ्यूल. ठीक है. Now we come to know of what is being cooked in kitchen without even entering there by the smell of
smell that reaches in our nostrils. Again, diffusion. ठीक है? The particles of aroma of food mix with the particles of air spread from the kitchen, reach us and even farther away. The smell of hot cooked food reaches us in seconds. Compare this with the rate of diffusion of solid and liquid. Due to high speed of particles and large space between them, gases show property of diffusion very fast. So अगर मैं diffusion का वो बोलूँ कि मतलब I'll arrange it descending order. So सबसे ज़्यादा diffusion का rate किस में होगा? It would obviously be gas, then liquid, then solid, because the amount of space between them. क्यों होता है इसमें ज़्यादा? Because it have larger amount of space. ठीक है? In the gaseous state, the particles move about randomly at high speed. Due to this random movement, the particles hit each other. In gaseous state, the particles move about randomly at high speed. Due to this random movement, the particles hit each other and also the walls of container. The pressure exerted by the gas is because of the force exerted by gas container per unit area on the walls of container. It finds to be something like क्या कह रहा है? ठीक है, कुछ नहीं कह रहा. Here, see this part. Gas में it's moving more freely, right? ये ज़्यादा freely घूम रहा है. Whereas देखो भाई ये तो रेजिडेंस को घूमने का मौका भी नहीं है. Very conservative people. Then यहाँ पे थोड़ी स्पेस, थोड़ी सहूलियत दे रखी है. गैस को बोला भाई जो मर्जी वो करो. अब ये जो मर्जी वो करने वाली बात अगर कह दी ना तो they started fighting. ठीक एक दूसरे से लड़ने लगते हैं. इतना जल्दी घूमते हैं कि they हाई स्पीड से एक दूसरे से टकराते हैं. That's why they exert some pressure on the container they are put into. ठीक है? That's why it's saying that the gases out there exert pressure. The gas particle exert pressure per unit area on the walls of container. I hope it's clear. अगर इतना clear है आपको तो we can just move on to the questions that you know, I have put forth here. First is again by UPSC CAPF from 2019, and one is there in UPSC CDS 2019 on basis of this topic. Okay, so lowering the atmospheric pressure on the liquid, we tends to increase the boiling point of the liquid, lowers the boiling point of the liquid, does not affect the boiling point of the liquid, increases the time required for it to boil. Again, अगर आप इससे relate इस topic से इस question को relate नहीं कर पा रहे तो you can leave it for a while, but you can give a thought. ठीक है? Atmospheric pressure कम हो रहा है, मतलब हम high altitude पे जा रहे हैं. ठीक है? Sorry, हम नीचे जा रहे हैं. ठीक है? And temperature is increasing. ठीक है? So what does it states? It lowers the boiling point of the liquid. Simple. It lowers the boiling point of the liquid. How it lowers the boiling point of liquid? इसके लिए आपको boiling point समझना पड़ेगा. That what is boiling point? We'll figure it out as we move forward and we'll revert back to it, and I'll make you understand the concept, just not by giving the answer. So for now you can just leave this question for a while. ठीक है? Now we'll move on to the question number 18. This is something you should really know. ठीक है? अगर इसमें लिखा भी नहीं हुआ तो you should know that which of the following are the most favorable condition for liquefying a gas. हम गैस को लिक्विफाई कैसे करते हैं यार? ठीक है? यहाँ पे हमने एलपीजी लिख दिया कि it's liquefied petroleum gas, but how does we liquefy a gas? Under what conditions? Read the options and mark an option, then I'll answer this. First option is low pressure and high temperature, low pressure and low temperature, high pressure and high temperature, high pressure and low temperature. The answer is D. It is put forth into a high pressure and low temperature. By this, by this, there is by this method we liquefy our gases.
ठीक है. So understood that how we liquefy a gas. ठीक है, we liquefy a gas by high pressure and low temperature. This is the condition that we put it into to make a gas liquefy. ठीक है, that's how, these are the favorable conditions for liquefying a gas. Simple: high pressure and low temperature. So now we talk about, can a matter change its state? Of course it can change its state. We all know from our observation that water can exist in three states of matter: solid as ice, liquid as familiar water, and so we talked about, can matter change its state, right? So the questions: what happens inside the matter during the change of state? What happens to the particle of matter during the change of states? How does this change of state take place? We need answers to this question, right? So if you see the question, right, so इस मैटर के अंदर ऐसा क्या हो जाता है कि that it changes its form, है ना? And the second question says again, what happens to the particle of matter during the change? मतलब it's related. These questions are related to the matter and the particles, right? Because particles are the core things, just like every human beings, the basic unit, the fundamental unit is cell, right? In the same matter, every matter, the fundamental unit is particle, and on the other basis, it's atoms again may build up together to make particles. ठीक है, atoms build up to make molecules and then particles. This is what the chain is all about. But for now, let us take particle as the fundamental unit of matter. Okay, so by this was all about the questions and the thought-provoking stuff. Then we'll talk about on increasing the temperature of solids. Now we'll answer this all questions by this paragraph. Okay, and we'll understand by this. So let us start. So on increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particle increases. Again, we have studied this earlier as well, like about the kinetic energy and diffusion. Both kinetic energy, both kinetic energy and diffusion is directly proportional to temperature. This is something you should be aware of, right? And I want all you to pay attention towards it. I think this is going to be important. Due to increase of kinetic energy, the particles start vibrating. Like what really happens, right? When it get heats up, we also vibrate, and with greater speed, the energy supplied by heat overcomes the forces of attraction between the particles. Wait, what does it saying about? The energy supplied by heat, the heat we give supply the energy. It's the energy. By heat we are supplying energy to the particles, and this particle, by this energy, overcome the forces of attraction between the particles. The particles leave their fixed position and start moving freely, right? So it's same manner like when you get scolded by your parents, you just started moving, you start studying, right? There is a change. In the same manner, here via heat we supply energy to the particles, and then ये particles बहुत हिलने डुलने लगते हैं, and they start to change its position, like it start moving. A stage is reached when the solid melts and it converted into liquid, right? अब हम इतनी heat दे देते हैं कि that change the matter. Come on, come to the back to the question. What happened inside the matter during this change of state? This happens when there is a change in the temperature. There is a state change. It changes its stage, right? The minimum temperature. Now, let's talk about the melting point, right? How it turns to solid to liquid, because it has got a melting point, right? This is important. The minimum temperature. They'll ask like what temperature? It's maximum temperature or the minimum temperature. It's the minimum temperature. The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called melting point, right? The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called melting point. Again, it's the minimum temperature. Okay, just mind it. The minimum temperature that solid melts to become liquid at atmospheric pressure is called melting point. I hope it's very clear.
The melting point of a solid is an indication of strength or force of attraction between the particle. What does this statement, मतलब क्या समझते हैं आप इस स्टेटमेंट से? सिंपल, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सॉलिड का एक इंडिकेशन है कि भाई उसमें स्ट्रेंथ कितना है, वो कितना साथ में रह सकते हैं. इट्स सिंपल, लाइक when your friends when your you and your friends are together and you have got difficult circumstances, how long you can stay together to manage that difficult circumstances, right? Same manner, अब इसका भी एक लिमिट है. The melting point of ice is 273.17 K. For your information, 0 degree Celsius is 273.15 Kelvin, right? The process of melting, that is change of solid into liquid, is known as fusion. Now this is also important, that what is fusion, right? What is fusion? Fusion is nothing but change of state from solid to liquid is called fusion, right? So this is what it's all about. When a solid melts, its temperature remains the same. Again, this is important. When solid melts, its temperature remains the same, right? जब solid melt होता है तो उसका temperature same रहता है. Again, this would be asked, like when solid melt, does the temperature change or it remains same? It remains same. So where does the heat energy go? तो energy भाई जाती कहाँ है, right? So you must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached. Till an ice melts, this happens even when, though we continue to heat the beaker. That is, we continue to supply heat. The heat get used up in changing, right? So it's nothing but the heat is used to change the stage. That's it. Where it is going? The question is asked. So where does the heat goes? The heat energy goes to change the state. Simple. To change the state. Right. I hope you're getting all the answers. If you have any doubt, you can just comment it down. Right? You can comment it down. Simple. So let's move forward. State by overcoming the forces of attraction of particles. Yes, the heat is provided. The heat provides the particle the energy to overcome the forces of attraction. Simple. As okay. Hmm. As this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it is get hidden into. Again, the heat about we are saying that the amount of heat we are providing to change the stage, that is known as latent heat. The latent heat is the chupa rustam. Chupa rustam, it's the hidden heat, right? The word latent means hidden. The amount of energy, again there is a statement, the amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid, again at atmospheric pressure, is at its melting point, is known as latent heat of fusion. See, if you see, let's dissect this statement. The amount of heat energy that is required to change 1 kg solid, अगर 1 kg solid है उसको हमें liquid बनाना है at atmospheric pressure, वही melting point पे, ठीक है, that is known as latent heat of fusion, right? So the particles in water at 0 degree have more energy. Again, this is again is important here. So if I just I want you to recall the statement of melting point. Melting point was the minimum temperature at which solid melts to become liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. So again, just recall that. Again, it's quite similar, right? Latent heat of fusion. What was fusion? If you don't need to learn the statements, but you should really understand each and every word about what you're studying. Fusion was nothing but to change the stage from solid to liquid. Solid to liquid, right? So the definition is asking, they'll ask, what is latent heat of fusion? Latent heat of fusion is nothing but it's the heat energy. Latent heat, नाम से पता चल रहा है यार, they're asking latent heat of fusion. तो
the amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric temperature at its melting point is known as latent heat of fusion. I hope it's clear, right? So again, this was the point. It's very important. Latent heat of fusion. So is the amount of heat दे आर आस्किंग ना, जब भी पूछे व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो पहले सोचना, थोड़ा सा ध्यान देना. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ओके, लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट से आता है द अमाउंट, कुछ तो हीट की बात हो रही है, लेटेंट हीट. सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that is required to change 1 kg of solid, so they have taken the basic value, right, the ideal condition to change 1 kg of solid into liquid. What are the condition? At atmospheric pressure, at its melting point. Simple. ठीक है. So the particles in water at 0 degree 273 K have more energy as compared to particles in ice at same temperature. When we supply heat energy to, again, I'll just not move on so fast. So the particles in water at, so particles in water at 0 degree Celsius have more energy as compared to particles in ice. Why? Why? The reason is latent heat. Again, the hidden heat in water at 0 degree Celsius, it would have more latent heat as compared to ice. So I hope you got the answer out. Like why? Because of the latent heat. You can write it here. LH. When we supply heat energy, to water, particles start moving even faster at a certain temperature. A point is reached when the particles have enough energy to break free, right? So when we supply heat energy to water, particles start moving even faster. At certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction. So the liquid starts changing into gas. So in this case, solid turned into liquid. In this stage, liquid is turned to gas. I hope it's clear. The same thing is happening here again. We are supplying heat energy into water to water in liquid stage, right? So at certain temperature, a point would reach that would break free the forces of attraction at this, मतलब इतना मार दिया ना उसको, इतना स्कोल्ड कर दिया, भाई मुझे नहीं रहना तेरे साथ, ठीक है, आई एम डन विथ यू, ठीक है. तो they'll just break the force of attraction. At this temperature, the liquid start changing into gas. The temperature, again, the definition is here. I'll just erase this. Yeah. So the temperature at which a liquid starts boiling at atmospheric pressure is known as boiling. Simple. The temperature at which liquids start boiling at atmospheric pressure is known as boiling. There is no minimum temperature, no maximum temperature. It's simple. The temperature at which a liquid starts boiling, right? The temperature at liquid start boiling at the atmospheric pressure is known as boiling. अगर मैं कहूं कि हमने बस एक स्टोव पे रख दिया, सिंपल टू अंडरस्टैंड, इवन इफ यू फॉरगेट, कि हमने वाटर को रख दिया और हम उतनी देर तक हीट करेंगे जब तक भाप नहीं बन जाती. आप भी जब किचन में खड़े होके इफ यू बॉइल वाटर, तो सिंपल एट सर्टेन, कुछ स्टार्टिंग में तो वो भाप नहीं बनने लगता है, टेक्स टाइम, राइट? तो उसी टाइम को बता रहा है यार, द सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर एट अ सर्टेन टेम्परेचर. तो वो सर्टेन टेम्परेचर आने में थोड़ा टाइम लगता है, राइट? जैसे ही वो सर्टेन टेम्परेचर आता है तो यू स्टार्ट सीइंग वेपर्स दैट, एंड वो सर्टेन पॉइंट, और उस सर्टेन पॉइंट पे वो टेम्परेचर वाटर का, ठीक है, एट विच लिक्विड starts boiling at atmospheric pressure is known as boiling point. और हमारा boiling point है 100 डिग्री सेल्सियस, राइट? आई होप इसके बाद से कोई boiling point पूछा क्या होता है तो you will be able to explain in detail, right? Simple. Again, अब एक और पॉइंट आप नोट कर लेंगे about this gonna be very important. थोड़ा सा अगर मैं हाईलाइट करूं अच्छे से, तो here the boiling
ओहो, व्हाट आई एम डूइंग, ये पार्ट अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझे। ठीक है। यप, बॉइलिंग इज अ बल्क phenomenon, राइट? phenomenon, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ लेते हैं बॉइलिंग इज व्हाट काइंड ऑफ phenomenon। दो क्वेश्चंस आते हैं, एक बॉइलिंग पे और एक इवेपोरेशन पे। सो बॉइलिंग वुड ऑलवेज बी अ बल्क phenomenon, bulk phenomenon, and evaporation would be a surface phenomenon. Why bulk phenomena is simple because बहुत सारे particles एक साथ उड़ते हैं, that's why it's known as bulk। बोलते नहीं bulk में ले जाना and things like that, and simple, uh, bulk of liquid gain energy, वही बस ठीक। I hope it's clear here। So let me sum up this two paragraphs, like what it said. So here it said about how to turn solid to liquid, about providing a amount of heat टू मेक। अगर मान लो यार आइस भी ले लिया हमने 1 kg, एंड वी नीड टू हीट इट अप, हमने रख दिया उसको हीट करने के लिए, उसको हमें लिक्विड बनाना है। तो 1 kg आइस लिया हमने और उसको ऐसे हीट किया, ठीक है, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे कि हमने उसको उसके सॉलिड स्टेट से, आइस से हमने वाटर बना दिया। दैट इज व्हाट लेटेंट हीट, और जितनी हीट हमने प्रोवाइड की वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। सिंपल, क्लियर, राइट? और वो, और हम जो हीट प्रोवाइड करते हैं उससे क्या होता है, उससे बंदा नाराज हो जाता है और अपनी जो अट्रैक्शन होती है ना पार्टिकल्स के प्रति, तो थोड़ा बोलता है यार तुम लोग डन हो, आई एम डन विथ यू, ठीक है, एंड इट ओवरकम्स दैट अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सिंपल। फॉर वाटर, दिस टेम्परेचर 373 के, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, is the boiling point, what I said, 100 degree Celsius. So why it's 373? Because 0 degree is 273, and matlab I wrote earlier also, like it was 0 degree Celsius is equal to 273. I'm very sorry for this kind of notes, but I'll just figure it out. We can do best possible things in coming days. Can you define the latent heat of vaporization? Of course, why can't? If you people can define latent heat of fusion, then you can define latent heat of vaporization too. आप सोचो, just relax and say, when you think of vaporization, what comes in your mind? कुछ उड़ रहा है, कैसे उड़ेगा? लिक्विड से उड़ेगा या तो डायरेक्ट सॉलिड से उड़ जाए। दो ही ऑप्शन है उसके पास, हम तो भाई सॉलिड से लिक्विड गए, अब हम लिक्विड से गैस जाएंगे। सो व्हेन इट टॉक अबाउट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, तो क्या बोलोगे तुम खुद सोचो। द अमाउंट ऑफ हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आया, लेटेंट हीट दिमाग में आया तो कुछ तो हीट होगी। फिर देन द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to change 1 kg of liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point is known as latent heat of vaporization. Simple। क्या चेंज आया यार? कुछ नहीं, हमने बस लिक्विड से गैस कर दिया, 1 kg लिक्विड ले लिया या फिर 1 लीटर लिक्विड ले लिया, उसको गैस में बनाया एट इट्स बॉइलिंग। कोई दिक्कत? आई होप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। Do it the same way as you defined with the latent heat of fusion. I hope you guys have done the same way. अब जब भी latent heat आएगा, you can think of latent heat मतलब the amount of heat energy हम जितना प्रोवाइड कराएंगे to change 1 kg of solid या liquid, डिपेंड करता है latent heat of fusion है latent heat of vaporization है, डिपेंड, ठीक है, it depends। अगर फ्यूजन होगा तो याद रखना फ्यूजन सॉलिड से लिक्विड, अगर वेपराइजेशन होगा तो लिक्विड से गैस। डन। This is because particles in wait, हम कहाँ पे थे? Yes, here. Particles in steam, that is water vapor at 373 K, that is 100 degree Celsius, have more energy. Again, this is important, guys. यहाँ पे ध्यान रखना, water vapor of 373 K has more energy than the water at the same temperature. अब तुमसे कोई पूछे कि 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर लिया है और 100 डिग्री सेल्सियस का वेपर है, वेपर यानी गैस है, ठीक है, स्टीम है, विच वुड हैव मोर पावर, कौन तुम्हें जल्दी जला देगा? पता है, फॉर यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट जो गैस निकलेगी ना, दैट वुड बी मोर, वो तुम्हें मोर बर्निंग सेंसेशन देगी एज कंपेयर टू वाटर। अगर 100 डिग्री का वाटर है तो यू विल बी सेफ इनफ, बट स्टीम इट विल, यू विल बर्न, राइट? दैट्स इज इंपॉर्टेंट। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट, द हिडन हीट,
एक तो नॉर्मल टेम्परेचर है ही 100 डिग्री सेल्सियस दोनों में, वाटर में भी 100 डिग्री सेल्सियस है और स्टीम में भी 100 डिग्री सेल्सियस है, बट स्टीम में ऐसा क्या हो जाता है कि वो इतना गर्म हो जाता है, स्टीम में हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस, वेट आई राइट, 100 डिग्री सेल्सियस प्लस वाटर, ठीक है। सो इसलिए होता है क्योंकि सिंपल है, स्टीम में 100 डिग्री सेल्सियस प्लस लेटेंट हीट होता है, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड गया, लिक्विड से गैस गया, ये हमने पढ़ा है। सॉलिड से लिक्विड ले जाओगे, क्या करोगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लिक्विड से गैस जाएंगे, latent heat of vaporization. So we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature. Simple. कैसे चेंज होता है टेम्परेचर, कैसे चेंज होता है स्टेट, बाय टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर का बहुत इंप्लीकेशन है, हम भी चेंज हो जाते हैं टेम्परेचर में, गर्मी होती है वी आर फंक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस, ठंडियों में वी आर इन डिफरेंट मूड, दैट्स हाउ, दैट इज व्हाट नेचर इज ऑल अबाउट, राइट, एट द एंड ऑफ द डे दैट्स व्हाट वी आर, ठीक है। We have learned that substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat. But there, okay, wait. I think we'll conclude till here and we have got some questions. Some questions. ठीक है, जितना ही पढ़ा है latent heat, you will get crystal clear. ठीक है, once you'll solve the questions forward which have been in the competitive exams, and ये थोड़ा competitive circle है in terms of, because it will give you an edge कि तुम क्यों पढ़ रहे हो, है ना, it will give you a goal कि bro this is coming somewhere, ठीक है, not just in examination or school examination, तो आप ace करोगे for no doubt, once your concept clarity is there you'll ace the examinations for sure, ठीक है। The next part is your competitive exams, that would really help you out, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे you'll get extra temperament, bro this is what it really comes, right? So solve some questions. So water at 273 K is less effective in cooling than ice at the same temperature. It is because water at, what is the question? Water at 273 K is less effective in cooling than ice at the same temperature. It is because water at 273 K has more energy. Simple. ठीक है, at same temperature. ठीक है. Answer would be C. Again, see this. Latent heat corresponds to the change in heat at constant. We always talked about temperature, neither volume nor pressure, nor temperature, volume, pressure. We always talked about temperature when it comes to latent heat. I hope it's clear. Two questions done. ठीक है. See, you're able to solve CAPF, CDS questions. So I think you should be really proud of yourself. ठीक है. Uh, I'm just not joking, but this is what the real fact is. If you're able to solve, kudos to you. And if you're not able to solve, you can just reverse back and you can just check it out. कि भाई कहाँ दिक्कत आ रही है? Where is it a concept that you are not able to make out, and things like that. Okay. So which one of the following statement is not correct? Water at 0 degree Celsius will have more energy than that of ice at 0 degree Celsius. So क्या बोल रहा है? Which of the statement is not correct? ठीक है. Water at 0 degree Celsius will have more energy than the ice at 0 degree Celsius. Of course, temperature of ice remains constant as long as its melting point is not complete. ठीक है. Water vapor at 100 degrees Celsius will have more energy than of water at 100 degrees Celsius. Again, this is temperature of water varies during the process of, nahi, this is not wrong. Temperature remains constant. ठीक है. Temperature is constant. Now you're done with this question also. Now, which one of the following statement about matter is not correct? Now you have to think about matter, which is not correct. ठीक है. On increasing the temperature of solid, the kinetic energy of particle increases. Correct, no doubt. The maximum temperature
नहीं, and the maximum temperature at which solid melts and becomes liquid at atmospheric pressure is called melting point. No bro, it's not maximum temperature. मैंने कहा था, ठीक है, you should really see. कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, कहाँ पे गया? Yes, see यहाँ पे है ना, the minimum temperature, the minimum temperature, the minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is known as melting point. So our answer would be this. ठीक है, B will be the answer. Let's go. Okay, we have got some more question. NDA में पूछा गया, तो you can understand that the importance of the topic latent heat of vaporization is very important. About melting point, boiling point is important. Simple है, मतलब if I again want to sum up, ठीक है, at melting point क्या है? Melting point again is the minimum temperature at which solid melts to become liquid. At what conditions? At atmospheric pressure is called melting point. Or when you talk about boiling point, the temperature at which a liquid start boiling at atmospheric pressure is called boiling point. Simple. और अब बात करते हैं दो लेटेंट हीट की. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसमें सॉलिड से लिक्विड बनता है, 1 kg सेम टेम्परेचर, ठीक है, सेम एट कांस्टेंट टेम्परेचर सॉलिड से लिक्विड हो जाता है. और रही बात लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की, तो लिक्विड से गैस बन जाता है, ठीक है. So now let's solve the questions. The specific latent heat of vaporization of a substance is the quantity of heat. Need to change unit from. अच्छा, unit mass से वही है, मतलब 1 kg से मतलब है, unit mass 1 kg हो गया, ठीक है. तो क्या पूछ रहा है? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. अब वेपराइजेशन समझ में आया, क्या क्या याद आ रहा है? लिक्विड से गैस होगा, ठीक है. सो लिक्विड टू वेपर, ठीक है, विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर. नो, यहाँ पे गलत हो गया ना गुरु, चेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं होगा. लिक्विड टू वेपर विदाउट अ चेंज ऑफ टेम्परेचर. सो वी गॉट द आंसर, बी पे मिल गया. वेपर टू लिक्विड नहीं, वेपर टू लिक्विड नहीं. सो सी, इट्स इजी राइट. अब यहाँ पूछता है, फिर इंडिया में क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर. लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, ठीक है. तो याद रखना आज से, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इज नॉट 0 डिग्री सेल्सियस बट इट्स 0 डिग्री केल्विन. क्या बोला था मैंने? तो 0 डिग्री केल्विन कितना हो गया सेल्सियस में? -273 सेल्सियस. एज आई सेड कि 0 डिग्री सेल्सियस 273 के होता है, तो 0 डिग्री केल्विन कितना होगा? -273 सेल्सियस, ठीक है. दिस इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर. Numerically, thermometers on which Fahrenheit scale and another Celsius scale shall read same at. Again, its answer is -40 degree. ठीक है, -40 degree पे it's same in Kelvin also and Celsius also. Again on thermometer, Kelvin thermometer and a Fahrenheit thermometer both give the same reading for a certain sample. What could be the corresponding reading? 301. 301 be the reading. Now let's move forward. Now we will understand. We have understood about the can matter change its state. Yes, it can change. It can change its state by if we infuse temperature in it, right? If there is a change in temperature, there will be change in state. Simple, right? So now we'll move on to just we have got one more topic left about the temperature change, related temperature, then we'll move on to pressure. So here we have got an activity. It's an important activity again. 1.13, take some camphor that is कपूर. आपने जलाया होगा, पूजा वूजा करते होंगे तो camphor, crush it and put it in china dish. हमने, ये चाइना डिश है, इस चाइना डिश में वो camphor डाल दिया, ठीक है. put it put an inverted funnel on china dish, put a cotton plug, डाल दिया, and now heat it slowly. Observe what. तो कुछ नहीं यार, अब ये क्या होगा ना, ये हमने सॉलिड कैम्फर है,
ठीक है, सॉलिड कैम्फर है, हमने उसको जलाया तो इसको लिक्विड में बनना चाहिए था ना, इसमें लिक्विड में बनना चाहिए था भाई, ये सॉलिड टू गैस हो गया। वाई? एंड व्हाट दिस प्रोसेस नोन एज, सॉलिड से लिक्विड क्यों नहीं गया, सॉलिड से गैस क्यों गया? अरे यार आपने आरती की होगी तो जैसे कपूर डालते हैं आपने जला दिया तो वो लिक्विड थोड़ी ना होता है, वो डायरेक्ट जल जाता है, राइट? इट्स इन गैस, दैट इज व्हाट सब्लिमेशन इज। इसी प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। आगे याद रखिएगा, दिस प्रोसेस of matter changing from solid to gas is known as sublimation, right? So it is a change of state directly from solid to gas. ये रहा आपका definition, a change of state directly from solid to gas without changing into liquid state, without changing into liquid stage is called sublimation। वो liquid में नहीं जाता, डायरेक्ट solid to gas चला जाता है, liquid को बोलता है बाय बाय, ठीक है? एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस इनटू सॉलिड, और अगर हम उल्टा कर दें, गैस से सॉलिड ले गए, इसको बोलते हैं डेपोजिशन। जो कि यहाँ दिखने को मिल रहा है, कैंपर सॉलिडिफाई हो गया, गैस से डायरेक्ट सॉलिड हो गया, वापस गैस बना, हमने कॉटन प्लग इसलिए डाला था कि रुक जाए, फिर गैस से जब थोड़ी देर बाद सॉलिडिफाई हो गया तो यहाँ पे हो गया। तो यानी ये यहाँ से जब गैस बनी, जब ये गैस बनी सॉलिड से गैस, तो वहां पे हुआ सब्लिमेशन, ठीक है? और जब गैस रुक गई और यहाँ पे सॉलिडिफाई हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है? क्या लिख रहा हूँ, erase all this। ठीक है, I hope it's very clear about what is solidification and what is sublimation. So इतना clear होने के बाद we can move on to the effect of change of pressure। तो मतलब एक हमने फर्स्ट फैक्टर देख लिया कि भाई टेम्परेचर से क्या क्या चेंजेस होते हैं, अब हम प्रेशर पढ़ लेंगे, देन आई थिंक वी आर जस्ट मूविंग टू द एंड ऑफ द चैप्टर। इसके बाद फिर इवेपोरेशन बचेगा एंड देन वी आर डन विद दिस चैप्टर। उसका से कोई तुम्हें कुछ भी पूछे, यू एबल टू आंसर एवरी बिट, ठीक है? लेट्स गो टू द प्रेशर। Effect of change of pressure. We have already learned that the difference in the various state of matter is due to difference in the distance between the constant particles। अब हम ये स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं यार कि मैटर का स्टेजेस जो हैं हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, राइट? कैसे डिफाइन कर रहे हैं, उनकी स्पेस, उनके बीच में कितना स्पेस है। अगर कम स्पेस है तो वो सॉलिड है, अगर अगर बहुत कम स्पेस है, कुचुर पुचुर है, कुचुर पुचुर पूरा एकदम चिपका हुआ, तो ये सॉलिड सच्चा है। फिर अगर हम लिक्विड की बात करें, थोड़ा दूर दूर है। अगर गैस की बात करेंगे, अरे ये तो बहुत ही दूर है, ठीक है? तो ये पॉइंट यही कहना चाहता है कि वेरियस स्टेजेस ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो स्टेज है, जो स्टेट्स है मैटर के, ठीक है, वो कैसे हैं, क्यों हम उसको डिफाइन कर पाते हैं कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसका एक मेजरमेंट है, किससे हम नाप रहे हैं? तो हम नाप रहे हैं उनके बीच में स्पेसेस कितने, कितना डिस्टेंस है उनके उनके पार्टिकल्स के बीच में। दैट इज द ओनली मेजरमेंट, दैट्स द रेफरेंस पॉइंट दैट वी से दैट इट्स चेंजिंग द मैटर। व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड compress a gas? चलो अब गैस को भी compress करना सीखते हैं। हमने इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको कराया भी था कि हाउ अ गैस इज compressed। There were two conditions, right? One was low temperature and high pressure, ठीक है? So will particles come closer, do you think, the increasing or decreasing and the pressure can change its states and matter? Yes, of course it can change the matter. Uh, Applying pressure and reducing temperature can liquefy the gas. Here you got the answer, right? मिल गया ना आपको आंसर कि हमने प्रेशर लगाया और टेम्परेचर लो कर दिया, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर इज इक्वल टू लिक्विफिकेशन, लिक्विफाई कर दिया हमने उसको, उस गैस को लिक्विफाई कर दिया। दैट्स व्हाई एलपीजीज के साथ भी ऐसे ही होता है भाई, जो आपके घर पे सिलेंडर्स आते हैं ना, वो कैसे होते हैं, जो सिलेंडर के अंदर है, आप देखना कभी कभी, तो वो डायरेक्ट आपको बाहर दिखता है कि वो गैस है, ठीक है, स्टोव पे दिखता है कि वो गैस है, बट अंदर इट्स वाटर, इट्स इन लिक्विड फॉर्म, नॉट वाटर स्पेसिफिकली बट इन इट्स इन लिक्विड फॉर्म, राइट?
सो हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? आपने देखा होगा कि नाउडेज पीपल आर इन अ फैशन कि वो धुआं ऑन स्टेजेस, देयर आर पीपल लाइक वो जो व्हाइट व्हाइट सबको धुआं दिखता है, वो क्या होता है? वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, इट्स स्टोर अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेज। यहाँ पे भी सब के साथ सब्लिमेशन हो जाता है बेचारे के साथ। ठीक है, इसलिए वो डायरेक्ट हम सॉलिड्स निकालते हैं और बहुत ठंडा होता है। आप लैब में पूछेंगे ना कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड दिखाने के लिए इट्स केप्ट इन वेरी हाई प्रेशर, एंड अगर आपने हाथ पे रख लिया, गिव यू बर्निंग सेंसेशन, सिंपल। हम ठीक है, हाँ, तो जस्ट बी कॉशियस अबाउट दैट। एंड let's go to again what we are stored. It is stored under high pressure. Solid CO2 gets converted directly to from gaseous state to decrease in the pressure to 1 atmosphere. ठीक है, without coming into liquid state. This is the reason that solid carbon dioxide is known as dry ice. इसलिए इसी रीजन के चक्कर में इसको बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलते हैं। पूछ सकता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, तो इट्स ड्राई आइस। ठीक है, बेचारा CO2 होता है, उसको इतने प्रेशर में डाल देते हैं कि बंदा सॉलिड बन जाता है। अब क्या ही कर सकते हैं। Thus, we can say that the pressure and temperature determine the state of a substance, whether it will be solid or liquid or gas. ठीक है भाई, मतलब अब देख लो, फर्स्ट वी स्टडीड अबाउट टेम्परेचर। टेम्परेचर में दम है कि भाई तुम्हारा स्टेट चेंज कर देंगे। ठीक है, दूसरा किसमें ताकत है? प्रेशर में ताकत। और जब भी लेटेंट हीट की बात आएगी तो प्रेशर मत बोलना, इट्स ऑलवेज अबाउट टेम्परेचर, ये याद रखना। अगेन रिकॉल रिकॉल रिकॉल। ठीक है, अब ये एक बार डायग्राम समझ लेते हैं क्या कहना चाहता है ये। अच्छा, सॉलिड से लिक्विड गए, फ्यूजन हुआ। अब फ्यूजन से याद करो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वो हीट अप्लाई की जिससे कि सॉलिड से एक केजी सॉलिड लिक्विड में बदल गया। ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, कोई चेंज नहीं हो रहा और टेम्परेचर कांस्टेंट है भाई। सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, फ्यूजन हो गया। अब ये फ्यूजन भाई क्लियर हो गया आपको। अब सॉलिडिफिकेशन देख लो, लिक्विड से सॉलिड हो रहा है, सॉलिडिफिकेशन हो गया। अब लिक्विड से गैस हो रहा है, वेपराइजेशन हो गया। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी याद रख लेना उसी से। The amount of energy which is used to go from liquid to gas at its boiling point, ठीक है, सेम टेम्परेचर, ऐसे ही होता है। ठीक है, इट विल बी इजी टू रिकॉल। ठीक है, फिर गैस से लिक्विड हो गया तो कंडेंसेशन होता है। जैसे गैस कंडेंसेशन से याद है आपको, वाटर साइकिल में कंडेंसेशन होता है। ठीक है, एंड नाउ गैस सॉलिड बन रहा है। अगर गैस से सॉलिड बनना है तो उसको डेपोजिशन बोलते हैं। अभी हमने सब्लिमेशन और डेपोजिशन पढ़ा था। फिर सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन रहा है तो इट्स सब्लिमेशन। सो दिस हैपन इन आवर कैम्फर वाली चीजों में ना, जो हम आपको कैम्फर वाला एग्जांपल दिया था। सॉलिड से गैस हो गया, यानी सब्लिमेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। आई होप इट्स क्लियर। डिपोजिशन में गैस से सॉलिड बन रहा है, सब्लिमेशन में सॉलिड से गैस बन रहा है। ओके, सो now we'll talk about evaporation, right? And this is gonna be the last topic of this chapter. आपको आई होप मजा आया होगा अबाउट लर्निंग ईच एंड एवरी स्टेप इजीली एंड आराम से। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, वी आर नॉट अंडर एग्जाम प्रेशर कि भाई कल एग्जाम है, नाउ आई हैव टू स्टडी। एंड मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज डोंट बी ओवरनाइट स्टडी, बिकॉज अगर आप कर भी रहे हैं तो अगर आप ग्रेड्स भी ला रहे हैं, दैट इट रियली नॉट गोना add value, right? And as a friend, as a cohort, I'll give a suggestion that please फर्स्ट डे से आराम से पढ़ाई करना शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। on easy pace, it would be easier, right? So now let's move on to evaporation. Do we always need to heat or change pressure or for changing the state of matter? Can you quote some example from everyday life that ये बोल रहा है कि यार हमेशा जरूरी है क्या कि हीट देना और चेंज इन प्रेशर करना, ये तभी मैटर चेंज होगा, तभी उसका स्टेट चेंज होगा? नहीं ना, वी सी इवेपोरेशन एवरी डे। यार तुमने अगर एक पतीले में पानी रख दिया बाहर और कल आओगे तो पानी होगा नहीं, ऑफ कोर्स नहीं होगा, क्योंकि भाई सुबह हीट हुआ, फिर वो ऊपर चला गया, वेपर बन गया। दैट हाउ हमने बचपन में पढ़ा फिफ्थ क्लास में कि भाई वाटर साइकिल होता है। So can you quote some examples from everyday life where change of the state from liquid to vapor takes place? Of course we can. Water cycle is there. ठीक है, water when left uncovered slowly changing into vapors. That the example I gave you right now. So we wet clothes dryer. What happens to water in the above two examples? We know that particles of matter are always moving and are never at rest. We say भाई ये लोग हमेशा चलते रहते हैं। At a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amounts of kinetic energy. Of course, every particle is different. Even human beings,
And at this moment, I'd say like no person as no human beings are similar with thoughts and with think. In the same manner, particles are also different and they have different amount of kinetic energy. Okay. So in the case of liquid, a small fraction of particles at the surface have higher kinetic energy, is able to break away from the forces of attraction. Again, उसको इतनी heat मिल जाती है कि भाई वो, ठीक है, particles at surface नहीं, मतलब it's here we are not applying heat of course, but उसको वो इतनी थोड़ी हीट मिलती है जो सूरज से मिलती होगी, एंड काइनेटिक एनर्जी इतना बढ़ जाता है ना कि इतना फास्ट मूव कर देता है, बिकॉज एट व्हाट वी आर डूइंग कुछ नहीं, ये 3-4 स्टेप का तो प्रोसेस है यार। ये या तो हम कुछ ऐसी एनर्जी दे रहे हैं उससे कि वो थोड़ा तेज दौड़े और उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़े, और उसका जो वो है ना, मतलब इतना डांट देते हैं उसको कि वो भाई अपना जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक कर देता है। यही तो प्रिंसिपल है, और क्या, और क्या ही हो जा रहा है। एनर्जी मिल रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और फोर्स, वो फोर्स को तोड़ देता है, यानी फोर्स घट रहा है, और वो लोग फिर अपना स्टेट चेंज कर लेते हैं। दिस इज द सिंपल प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप क्या है, एनर्जी दिया। दूसरा स्टेप क्या है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी दिया तो काइनेटिक, भाई वो तेज दौड़ने लगे। ऐसा है ना कि भाई देखो, अगर तुम पढ़ नहीं लो, यू आर एट रेस्ट, तो आपके फादर आते हैं एंड ही ट्राई टू गिव यू सम मोटिवेशन टॉक, भाई कि तुम ये कर लो एंड यू विल डू क्वाइट गुड इन योर लाइफ, राइट। एंड अगर आप उससे नहीं मानते, तो गिव मोर एनर्जी बाय स्कोल्डिंग यू, देन आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है कि नो ब्रो आई नीड टू गो टू स्टडी, देयर इज द मूवमेंट। फिर अगर आप उससे भी नहीं मानते, तो ही ट्राई टू, यू नो, फिर थोड़ा मैन हैंडलिंग वाला केस हो जाता है। सो देन यू देन यू ब्रेक अप, देन यू से कि नो, नो वे आई एम गोना स्टडी। ठीक है, देन वो स्टेट ऑफ जो रेस्ट था ना आपका, इनर्शिया, वो अब हट गया। तो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट। अब देखो, अब हम इवेपोरेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ये याद रखना, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। बॉइलिंग पॉइंट इसलिए नहीं दिया बिकॉज वी ही डोंट वांट टू से कि हीट दे रहे हैं हम उसको, ठीक है। बिलो बॉइलिंग पॉइंट किसी भी टेम्परेचर पे वो लिक्विड से वेपर बन जाए, उसको इवेपोरेशन कहते हैं। दैट इज व्हाट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन इज, ठीक है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। इवेपोरेशन, कोई पूछे ना इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में क्या डिफरेंस, दोनों चेंज हो रहा है लिक्विड से, सॉरी, लिक्विड से गैस में, वेपराइजेशन भी और इवेपोरेशन भी। बट इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट के नीचे होता है और वो एट बॉइलिंग पॉइंट होता है। समझ गए, सिंपल। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अब देखते हैं भाई इवेपोरेशन में क्या फैक्टर्स, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। फैक्टर्स में क्या ही है, एक पूछेगा कि अगर आपने सरफेस एरिया बड़ा कर दिया तो क्या होगा। सरफेस एरिया बड़ा कर दिया, भाई देखो, अगर तुमने छोटा पतीला रखा है तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको उड़ने में, बिकॉज ऊपर वाला जो पार्टिकल्स होंगे ना, उनको बस उतने ही पार्टिकल्स होंगे, फिर नीचे 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 जाना पड़ेगा। लेकिन अगर बड़ा एरिया है तो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। In same manner, people in Gujarat, like in a western state, people used to, take a sip of cup of tea by putting it into saucer. saucer पे क्यों डालते हैं, बिकॉज उनका सरफेस एरिया बढ़ जाए ना, जल्दी ठंडा हो जाए। भाई दिस अब याद रखना, ठीक है। कप में डाल के हमने सॉसर में डाल दिया कि भाई ठंडा हो जाता है ना, थोड़ा एरिया बढ़ा दिया हमने उसको, वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। दिस इज व्हाट इट मीन्स, फ्रॉम एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया इवेपोरेशन बढ़ता है, ठीक है। एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो तो सिंपल सी बात, आपको पता है कि वो बढ़ेगा ही। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ह्यूमिडिटी। अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी से टेम्परेचर बढ़ता है। अगर नमी होगी ना, अगर ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, नमी मतलब थोड़ा सा मॉइस्चर प्रेजेंट होना एटमोस्फेयर में। अगर एटमोस्फेयर में ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होगी, मतलब बारिश में तुम आप कपड़े कैसे सुखाओगे भाई, नहीं सुखा पाओगे ना। इन द सेम मैनर, अगर देर इज डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर मतलब बारिश नहीं हो रही तो वो कपड़ा सूख जाएगा एंड आपकी मतलब इवेपोरेशन जल्दी होगा। लेकिन अगर अगर यहाँ पे इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी लिखा होता, अगर इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी लिखा होता तो योर इवेपोरेशन रेट वुड हैव डिक्रीज्ड, ठीक है। सो अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, दिस इज ह्यूमिडिटी एंड इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ह्यूमिडिटी वुड डिक्रीज, इवेपोरेशन वुड इंक्रीज, ठीक है। विंड स्पीड बढ़ेगा, जब हवा तेज चल रही है कपड़े सूख जाएंगे तेजी से, खतरनाक, ये भी हो गया। Now let's come to some questions, देखते हैं कितना अच्छे से आपने evaporation पढ़ा है। You can take time, you can pause the video and you can write your answers in a page, ठीक है।
So, but now let me discuss how is the rate of transpiration affected by decreasing humidity and by decreasing light intensity. Okay, अगर हमने क्या पूछा ट्रांसपिरेशन, हम उसको कंक्लूड कर सकते हैं थ्रू इवेपोरेशन से भी। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, प्लांट्स में होता है। तो अब उसी को समझते हैं। अगर हमने ह्यूमिडिटी बढ़ा दी, अगर हमने ह्यूमिडिटी डिक्रीज कर दी, तो ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, ऑफ कोर्स बढ़ेगा। तो मतलब ये जो डिक्रीजेस वाले हैं उनको हटाओ, ठीक है, इंक्रीज होगा। अब बात कर रहे हैं इंटेंसिटी, अगर लाइट कम होगी तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, नहीं होगा। तो इंक्रीजेस हटा दो, ये बचा सही। द डिक्रीजिंग ह्यूमिडिटी से ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगा और डिक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी से वो डिक्रीज होगा, सिंपल। ठीक है, आई होप इससे आपका दिमाग थोड़ा खुला होगा and you'll able to recall that what you have studied. So next question, which of the following statement is not correct? Which of the following statement is not correct? The rate of evaporation depends on temperature. Which of the following statement is not correct? See, you have to be very careful about correct and not correct. Not correct. The rate of evaporation depends on temperature. Of course, it depends on temperature. The rate of evaporation does not depend on surface area. अबे यार, it depends, right? Depends यहाँ क्या लिखा हुआ है? It depends on surface area, सबसे ऊपर वाला टॉपिक है। क्या पूछ रहे हो guys? You got the answer. बाकी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं for our knowledge purpose. The rate of evaporation depends on humidity. Of course, it depends. The rate of evaporation depends on wind speed. Of course, देख लो सारी wind speed, क्या बोलते हैं फिर ह्यूमिडिटी। अब यहाँ पे नॉट डिपेंड क्यों कर दिया सरफेस एरिया पे भाई, बात करते हैं। सो लेट मी मार्क द आंसर, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन स्टेटमेंट करेक्ट है? कम ऑन, इजी, मैंने बताया भी था आपको ये क्वेश्चन, आंसर पहले ही बता रखे, बट यू जस्ट नीड टू रिकॉल। ठीक है, बोथ बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन आर सरफेस फिनोमेना, नो। बोथ बॉइलिंग इज अ सरफेस फिनोमेना but evaporation is a bulk phenomena. Boiling is surface phenomena, but boiling, both boiling and evaporation are bulk phenomena. No, boiling is a bulk phenomena by बहुत सारे particle एक साथ, and evaporation is, you got the answer D. I hope evaporation is very clear. Now अब evaporation का second part है कि how does evaporation cause cooling? It's important. लोग बोल देते हैं evaporation cause cooling and बात खत्म, नहीं, कैसे होती है भाई cooling? क्या हो जाता है ऐसा कि उसमें cool कर देता है evaporation से? So in an open vessel, the liquid keeps on evaporating. The particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. This absorption of energy from the surrounding makes surroundings cold. क्या क्या बोल दिया मैंने ऐसा? थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है वापस। The particles of liquid absorb energy. Absorb, खींच लेता है। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड है वो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। अब भाई इसको क्या चलना चाहिए कि वो एब्जॉर्ब कर रहा है किसी से, क्यों ले रहा है वो चीजें? बिकॉज उसका भी तो लॉस हुआ है यार, टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। दिस अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, अब ये जो एब्सॉर्प्शन होता है ना एनर्जी का, उससे होता है सराउंडिंग कूल। आई होप इट्स वेरी क्लियर। क्यों करता है कूलिंग? बिकॉज भाई एक तो इवेपोरेशन हुआ ऑलरेडी उस पार्टिकल का, लेकिन एक बेचारा सा पार्टिकल है, प्यारा सा पार्टिकल, उसको तुमने वैसे ही गर्म करके इवेपोरेट कर दिया। अब जा रहा है बेचारा यार, पहली भूख लगी है, वो बाहर से खाना ले रहा है। अब ये जो अब्जॉर्प्शन है ना, खाना लेने का प्रक्रिया, ये जो ले रहा है उसी को, उसी वजह से कूलिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड इन दिस मैनर। दिस इज व्हाई वी फील कूल। ठीक है, जब इवेपोरेशन होता है तो, ठीक है, ऐसे कूलिंग इफेक्ट आता है बिकॉज पार्टिकल्स ऑब्जॉर्व करते हैं एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, और जब एनर्जी सराउंडिंग से कम होगी तो भाई हमें कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, ऑफ कोर्स, सिंपल सी बात है ना। ठीक है, यू गॉट द आंसर। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर डालते हैं तो वी हैव गॉट सम कूल सी सेंसेशन होती है। अगेन टेम्परेचर डिफरेंस होता है, हमारे पे गिरा, इवेपोरेशन हो रही है, वैसे ही इवेपोरेशन के चक्कर में क्या बोलते हैं, ये कूलिंग लेगा एंड तो डन, कूलिंग इफेक्ट मिल गया, वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है एनर्जी, हीट, थोड़ी सी एनर्जी जो लॉस्ट हुई है बस, और आप थोड़ी सी कूलिंग कूलिंग सेंसेशन आ जाती है। आफ्टर अ हॉट सनी डे, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ।
because the large latent heat of vaporization of water help cool the hot surface. देख लो फिर से latent heat of vaporization आ गया. Latent heat of vaporization क्या होता है पता ही है आपको. latent heat of vaporization क्या होता है? When we change liquid to gas at its boiling point, atmospheric pressure, at atmospheric pressure and temperature is constant. ये conditions हो गई आपकी. ठीक है. Can you cite some more examples from daily life cooling? सिंपल सी बात है यार, ये सब it's simple. Like we wear cotton clothes in summer. अब भाई गर्मी में you have seen we have got different set of clothes, uniform for in our school also. Like we've got summer uniform, we've got a winter uniform. Why? People have senses, right? They have brains. समर में क्यों कॉटन क्लोथ्स पहनने के लिए बोलते हैं? बिकॉज इट्स इजी, इवेपोरेशन बिकम्स इजियर, उसमें पोर्स होते हैं एंड इट बिकम्स इजियर योर स्वेट टू इवेपोरेट एंड यू गिव इट कीप्स यू कूल. बिकॉज अब वो कूल होगा, इवेपोरेशन हो रहा है, इसकी एनर्जी लॉस होगी, फिर वो ऊपर जाएगा पार्टिकल बेचारा, फिर वो अब्जॉर्ब करेगा, फिर वो जो अब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया है उसी से आपको कूलिंग इफेक्ट आएगी. दैट्स व्हाई कॉटन इज इट्स अ गुड ऑब्जॉर्वर. अब जितना अच्छा ऑब्जॉर्वर होगा उतनी अच्छी कूलनेस आएगी. सिंपल. ठीक है. फॉर इजी इवेपोरेशन लिखा होगा. आई होप concepts are very clear. That is my main motive. Okay, we have got something more. Why do we see water droplets on the outer surface of glass containing ice cold water? अच्छा, अब हाँ, अभी फ्रिज से पानी निकाल दिया मैंने एक बॉटल में से, ठीक है, और यहाँ पे ड्रॉपलेट्स होते हैं तो बाहर से, बाहर बाहर भाई पानी पानी से होता है, अच्छा भी लगता है हमें. ठीक है. Let us take some ice cold water in a tumbler. Soon we'll see that water droplets on the surface of the tumbler. क्यों होता है? Because the water vapor present in the air on coming in contact with the cold glass of water loses energy and get converted into liquid state. Simple. यहाँ पे भी conversion होता है. ठीक है. बिकॉज जो वाटर वेपर प्रेजेंट है ना, अब मान लो इसमें से मैंने पानी ग्लास में डाल दिया, अब थोड़ी देर में देखना यहाँ पे फिर ठंडा ठंडा लगने लगेगा. एक बार निकाल के देखना फ्रिज से और पानी डालना, फ्रिज का पानी एक अपने ग्लास में डालना है, या फिर शीशे की ग्लास में डालना है, या फिर नॉर्मल एल्यूमिनियम में डालोगे ना, तो विल गेट टू नो क्यों होता है. बिकॉज द वाटर वेपर प्रेजेंट इन, जो वेपर है गैसी तो है हमारे यहाँ पे, तो जब ये वाटर वेपर कांटेक्ट में आता है ना इस कोल्ड ग्लास के, तो वो एनर्जी लूज कर देता है और वो लिक्विड, और वो जब वो गैस है और अपनी उसके पास एनर्जी है, वो लूज कर जाएगा तो लिक्विड बन जाएगा. इसलिए यहाँ पे गीला गीला सा लगता है. आई होप इट्स वेरी क्लियर. ठीक है. सो ओके, सो वी हैव गॉट सम क्वेश्चंस नाउ. आपको ये अच्छे से समझ में आ गया. सो व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे? अब बोल रहा हूँ यार, डेजर्ट कूलर है, हॉट डे पे क्यों, मतलब है ना, सही से बेटर कैसे काम कर सकता है हॉट ड्राई डे पे? मेरे को भी पहले लगा था यार क्या होता होगा, फिर मैंने पढ़ा ब्रो, हमने अभी तो पढ़ा है, मतलब मोर मोर द टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर ज्यादा तो इवेपोरेशन ज्यादा, इवेपोरेशन ज्यादा तो कूलिंग इफेक्ट ज्यादा. आई होप यू गॉट द आंसर. मतलब इट वर्क्स बेटर ऑन हॉट ड्राई डे बिकॉज टेम्परेचर ज्यादा है, इवेपोरेशन ज्यादा, और इवेपोरेशन ज्यादा है तो कूलिंग ज्यादा है. डन. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज डन. सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है. हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन earthen pot मटका becomes cool during summer? कूल कैसे हो जाता है? तो भाई एक मटका है, अभी कूल क्या अपने आप फ्रिज तो है नहीं यार कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं सप्लाई एंड फिर वो ठंडा कर रहा है रेफ्रिजरेटर. क्यों होता है? तो भाई जो earthen pots होते हैं ना, उसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे पोर्स होंगे, पास देखना, थोड़े छोटे 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 पेड़ पोर्स होंगे, उससे होता है इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन होगा तो कूलिंग इफेक्ट आएगी, इसलिए वो कूल रहता है. आई होप अगेन इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको. और ये पाम, ये तो आपने देखा है, एसीटोन डालते हैं, फिर टेम्परेचर डिफरेंस होता है, उड़ता है, इट कम्स इवेपोरेशन टेक्स प्लेस अगेन, इट गिव्स यू कूलिंग सेंसेशन. अभी हमने सॉसर वाला हॉट टी का बोला कि सॉसर में क्यों पीते हैं इन वेस्टर्न स्टेट्स. ठीक है. बिकॉज इट इज सिंपल, सरफेस एरिया बड़ा है, इवेपोरेशन जल्दी होगा, और इवेपोरेशन होगा तो फिर कूलनेस होती है. ठीक है, ये याद रखना. एंड फिफ्थ, what type of clothes should we wear in summer? कौन से क्लोथ्स पहनने? यू कैन जस्ट कमेंट इट डाउन.
ठीक है. Thank you for being with me for this much hours. It's an immense pleasure to teach you guys. And if you liked the whole, you know, whole class, you can just comment it down, and you can just express your views that you liked or not. What are the things that you want more from me, from the content wise and things like that, and we'll improve. And it's simple, uh, because change is the only constant. Thank you very much.